That is the best thing. And also we are, as a journalist, we all are facing big mental stress these days. As we told you, due to Corona, because as we were covering Corona as a frontline barriers, going everywhere, and we lost, due to that, a lot of our colleagues we have lost also, their families we have lost. So we suffered all this. Then in these days, a lot of job losses were there. Salary cuts were there for journalists. There is a pressure from the authorities also on us. So it all gives a lot of mental stress and a different type of turmoil which people don't understand as a journalist also. We think something is, other thing is happening to us. So we are really thankful to you. You have come here on our invitation. So first I will request our press club president, Umakant ji, to just give a bouquet to Dr. Saab and welcome him. Thank you, sir. Thanks. Thanks. Now I will request Umakant ji to say. Thank you, Dr. Desai. I welcome you on behalf of Press Club India. ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है 4,200 members and ये premier institution of the journalist institution in the world, I can say. और सबसे बात ये है, दूसरी बात ये है कि हमारे जो बिरादरी है ये पूरा स्कैटर्ड है और पिछले 2-2.5 साल से खासतौर पर डेमोनेटाइजेशन के बाद वो स्लो डाउन हुआ है, उसका सीधा इफेक्ट पूरी मीडिया इंडस्ट्री में पड़ा है और ऑलमोस्ट 2/3 people lost the job fully or partially. 2/3. As per the I can tell you that around 10 lakh plus जो लोग थे, 10 lakh plus लोग मीडिया इंडस्ट्री में 2015-16 तक जॉब करते थे। 2015-16 more than 10 lakh plus job provided करते थे मीडिया इंडस्ट्री in all sphere of life, including photography, photojournalism, mainstream journalism, digital, television, and जो हालत हो गई कि जब जॉब लॉसेस हुए तो सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को सब जगह से नुकसान हुआ। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट थे, जो 10-20 साल काम करके या फोटो जर्नलिस्ट थे, तो 10-20 साल में मेन स्ट्रीम में काम किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम अपना काम शुरू करें, छोटी मोटी पूंजी लगा के या दोस्तों से कर्ज लेके या जो भी उन्होंने किया। और उसके बाद उन लोगों के जीवन में ये आया कि ये जो स्लो डाउन हुआ, फोटोग्राफी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड फोटोग्राफी का नुकसान होने से क्या हुआ कि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि जो फील्ड में जब तक आप नहीं जाएंगे तो आपको कोई तस्वीर नहीं मिली। वी लॉस्ट ए फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट इन काबुल लास्ट जुलाई, and it was a tragedy for he was a veteran, very renowned Sympathy. And second thing ये हुआ है इस प्रोफेशन में जो हमारा प्रोफेशन है मेंटल प्रोफेशन है, मतलब मैं आई वाज वर्किंग इन ए न्यूज़पेपर एज चीफ ऑफ ब्यूरो इन दिल्ली। होता क्या था कि मेरे दोस्त असम से आए, वो मेरी बिल्डिंग में आए, आई वाज वर्किंग सिन्हा साहब का हिंदुस्तान का थे, वो मेरी बिल्डिंग में आए तो बोले कि उमाकांत जी आज शाम को हम दोनों खाना साथ खाएंगे। उनके साथ असम पुलिस के एडीजी भी थे, तो वो दोनों के दोनों सिविल वर्दी में तो मैं पहचान लगा ये एडीजी असम है। मैं क्योंकि असम में फ्रीक्वेंटली जाता था, तो मैंने उनको बोला कि मैं उनको छोड़ने के लिए नहीं चाहा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन चल रहे हैं, तमाम तरह की ब्रीफिंग हो रही है, पार्लियामेंट चल रही है। तो मैंने कहा कि मैंने कम से कम चीफ ऑफ ब्यूरो बने हुए मुझे 8-9 महीने हुए, मैंने दिल्ली की शाम को ढलती हुई पहली बार देखी कि दिल्ली की शाम कैसे ढलती है। लोग अपने घर जा रहे होते थे और हम अपना काम करते थे। तो
ये जो चीज़ होती है ये पेशे की एक प्रॉब्लम है। अब आप डिवोट नहीं करेंगे तो आप विल बी आउट फ्रॉम द प्रोफेशन मेंटली। एंड आप समझ सकते हैं सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे साइंस के बड़े रिनाउंड साहब बैठे हुए हैं, ये वो समझ सकते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा स्टडी है इन चीज़ों पर। एंड दूसरा ये कि जो फैमिली प्रॉब्लम शुरू हुई लोगों के साथ में, जो अर्नर्स है हमारे भी लॉस्ट अराउंड 70-80 member of the press club of India, and it was a big loss to the press club of India। और बड़ा पेनफुल था हमारे लिए कि हमने 70 लोगों का एक साथ कंडोलेंस किया। It was a very tragic moment for us, and मतलब ये कल्पना नहीं कर सकता हमने ऐसे लोगों को खो दिया जो प्रेस क्लब के एसेट्स थे, जो हमारे मैगजीन को एडिट करते थे, जो हमें रियल फोटोग्राफ्स लेते थे, जो हमारे ऐसा लिखते थे वो लोग। और ऐसे लोग 3-4 जनरेशन के दादाजी, यहाँ दादाजी प्रेस क्लब के मेंबर थे, फादर प्रेस क्लब के मेंबर थे, वो प्रेस क्लब 3 जनरेशन को हम जानते थे। तो वो सब चीज़ें हुई तो बड़ा लॉस हुआ, मेंटल लॉस हुआ। मैं तो चूँकि मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जानता। मैं जनरल जो चीज़ें छपती हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स, रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं आप दुनिया के, आप जैसे कहीं आपने कुछ बोला, कहीं यूट्यूब पे बोला, कहीं कुछ बोला, कहीं आपको कोई लेख छपा, किसी ने इंटरव्यू किया, वो चीज़ हम पढ़ लेते तो सुपरफिशियल नॉलेज हमारी। लेकिन इसका ये कि इसका निदान लोग तरह तरह के निदान बताते हैं, कोई कहता है ये होगा, से होगा, कुछ कहता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इस तरह से 1-to-1 आमने सामने नहीं बैठेंगे तो हमको जो जिस्ट है, जो ग्रिप जो हमारी चीज़ें होनी चाहिए, वो ग्रिप हम नॉलेज पर नहीं गेन कर पाते। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं पीछे जाऊँगा कि आज वर्किंग डे था। मैं टोटल आई वाज एक्चुअली बिजी इन द यूपी इलेक्शन, यू नो, ओके, ये इलेक्शन बिजी था, एंड आई फॉरगेट टोटली कि आज दिन क्या है। अगर मुझे दिन का सैटरडे होता या फ्राइडे होता तो हमारे यहाँ बिग क्राउड होता, लेकिन मैं उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि हमारे बहुत सारे लोग फ़ोन आए मेरे को। हम अगर फ्राइडे को सैटरडे होता तो हम 10-12 लोग को फोन आया, लेकिन हमारे ये एक्सपीरियंस हो गया कि 7 दिन पहले इस तरह के वर्कशॉप, इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए। मैं आपका वेलकम करूंगा, और रघुराय साहब भी बैठे हुए हैं, वेटरन, हम तो उनके सामने मैंने टेकैत साहब का हम यहाँ कर रहे थे ना, इंडिया गेट पर जब धरना वगैरह हुआ था, तो हाँ, तो एंड ही इज आई कैन से कि renowned photographer and photojournalist, and he has aspirations to be lot of young journalists and young photojournalists of the country, and उनकी फोटो जो हम जर्नलिज्म में नहीं आए थे तो इंडिया टुडे में, इलस्ट्रेट वीकली में कोई मैगजीन नहीं होती थी जहाँ तक बड़ा साफ की चीज़ें नहीं चलती थी। तो ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, हमारी प्रेस क्लब से जुड़े हुए। मैं सबका वेलकम करूँगा, सिन्हा साहब का बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये याद दिलाई, और हम अगली बार डॉक्टर साहब ये प्रॉमिस करते हैं कि ये नहीं कि दिस इज द बिगिनिंग, एंड हम अगली बार करेंगे, और जब ये चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो हम नई चीज़ों के साथ में आएंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि प्रेस क्लब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, और ये जो क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है सामने की, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसमें अपना जो भी आपका व्याख्यान है उस आरम्भ करें, और मैं स्वागत करता हूँ सेना साहब। थैंक यू अवकाश जी। बस अवकाश जी ने कहा कि ये सब इश्यूज पढ़े हैं, तो डॉक्टर साहब के विषय में मैं पल्लव थोड़ा सा आप बताएं, तो पल्लव आपको ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो इनके मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पल्लव ने आपको देखा है काम करते हुए। यस, नमस्कार देसाई साहब। Numbers don't matter. It is the quality which matters. Absolutely. Okay. In this room, you are seeing collectively the best pictorial minds. So please look at that. Done. With Raghu and Sinha Saab and Sandeep, Hari, but it's some of the best pictorial minds. जो documentation India का हुआ है, और जो दुख और दर्द हमने देखा है, वो बहुत कम लोगों ने देखा है इतनी
और कोविड के टाइम पे जो दुख और दर्द देखा है, आई थिंक दैट उससे बहुत ट्रॉमा गया है। और ये भी समझने की बात है, आपने कहा कि लोग देखिए, हर कोई आना नहीं चाहता है सामने, कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहता है ऑन बताने के लिए कि कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इतना स्टिग्मा होता है। एंड आई कैन से हियर, भुज का अर्थक्वेक कवर किया, सुनामी कवर की, कोविड कवर किया, हर चीज इफेक्ट करती है मेंटली। रघु राय साहब थे, नर्मदा वाला एजुकेशन, देखिए कितना बड़ा एजुकेशन था, कितने लोगों को इफेक्ट हुआ, वो सब कहीं कहीं हम लोग के दिमागों में रहता है। बट जस्ट टू दैट वाज द फीडबैक, बट Nimesh bhai, and that's how he is known. I went and filmed inside IHBAS, an interview with him, and I must say, fantastic interview, keeping India mentally fit. We had a team of 6-7 people in the middle of COVID to go and cover it, and he was director of IHBAS. And IHBAS at one time was considered a Chadra mental asylum. And there is a historical ward there, if you go and see, where people were still kept in very ancient conditions. And today, when we film there, it is hats off to Dr. Desai. But he is instrumental in creating for India that removing that stigma from a mental hospital to the Institute of Human Behavior. When there's a quantum shift in that, from what is a mental hospital to an Institute of Human Behavior. So one little thing I will relate, when I was there, he let our 3 camera teams go around the hospital freely. You go and film every nook and corner of the hospital. Most hospitals, they don't allow you filming like that, let alone in a mental health hospital. You go and film whatever you feel like. If you find anything, you come and report back to me. That's true. He's also been instrumental in changing policy at the national level. The new mental health policy, the new framework which we see, where it is recognized, a lot of the effort really. We must meet and talk now. I'm Dr. free. Nimesh Desai. He's I'm both done. trained at Relieved. All India Institute of Medical Sciences Yes. and also worked at the National Institute of Mental Health and Neurosciences and also at Johns Hopkins, sir? Johns Hopkins. So, the cream of the institutions, and we present to you Dr. Desai, and this is an interactive session. So he will speak for a little while and then we can throw up our issues, and he's agreed that he is willing to share his number and email ID also if people want, because we can understand that not many things can be discussed openly and people may want a one-on-one session at a later date with him. He is no longer the director of IHBAS, so fortunately he's been able to give us time, otherwise he is normally very busy. But hats off to him for what he has done for the country on mental health, and that he agreed readily to speak to the journalistic community which has suffered so much. All of us have seen the kind of trauma which the country went through in the last 2 years, and that for us stays in our minds. तो तकिए पे सिर रखते हैं तो बहुत चीजें आती हैं, कभी अच्छी भी होती हैं, कभी बुरी भी होती हैं। 2 साल में काफी मेमोरीज ऐसी हैं जो कि बहुत दुख देने वाली हैं। तो उसका जो ट्रॉमा है उसको किस तरह से हम बांट सकते हैं। एक अक्सर एग्जाम्पल यूज करते हैं कि दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है, अंदर ही अंदर प्रेशर बनता रहता है, और वो अगर रिलीज नहीं हो तो फटता है। एंड दैट्स व्हाट वी सॉ हमारे एक कोलीग की जब सुसाइड हुई थी, विच इज हाउ दिस प्रोग्राम केम आउट एज अ जेनेसिस, एंड आई एम श्योर अदर इंस्टीट्यूशंस कैन टेक इट फॉरवर्ड। बट लेट्स नाउ हियर Dr. Desai, and then we can have an interactive session with him and people can ask. You don't need to say that ये मेरा problem है, it can be a neighbor's problem also. Thanks. सर ऐसा करें, ऊपर नहीं बैठना। हाँ, ये कुर्सियाँ नहीं सर।
नहीं, this is better, ना? Sir, ये बहस नहीं है. I think this is better. हाँ sir, जैसे सबको कन्वीनियंट लगे। Wherever you feel convenient. सब बढ़िया. As you feel. I've always been very uncomfortable with diocese and और ये तो बढ़िया छोटा अपना दोस्तों का ग्रुप है. Do I need this? No. ये चाहिए. अच्छा इसके साथ भी. Oh, okay, right. नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम. Namaskar, Sat Sri Akal, Vanakkam, and everything. Really, I'm thrilled to be here. I'm thrilled to be here more for a dialogue. For a dialogue where, if at all, I can help clarify a few ideas and crystallize ways of handling the psychological issues. That's always a pleasure, but also genuinely, like I'm already learning through the informal discussions since the morning, for me and for us as mental health professionals, to be able to understand from all of you firsthand your experiences. But I promise my humane, scientific, intellectual curiosity on those counts can and will take a back seat. So that may be incidental learning. The primary focus and purpose for today is surely to for us to collectively understand the psychological issues of any such experience that human race has from time to time, and if at all we can see how one can deal with it better than one may have. I don't know if any one of you has come across this line of thought, and I don't claim this to be entirely original, but it's appealed to me, and I've kind of thought about it and built upon that, also having been a bit of a history buff. The young people or the adult population of say 100 years earlier also went through a series of experiences, not just the epidemic of 1918 and 220, but imagine people who were in their teens or who were in young adulthood at the peak of their career at the turn of the previous century. What did they go through? What did human race go through? First, the Great War. It wasn't called the First World War, of course, it was called the Great War, came to be called the First World War later. So you had the Great War for 4 years, you had barely finished that, and then you had the epidemic. And then, of course, the major power that had emerged by then had the prohibition-related effects and the Great Depression in the 30s. And soon after that, you had the Second World War. And so that generation, at the turn of the century, went through, if you look at, a series of very severe traumatic global experiences. And yet, when you look back, as I think it's evident, did the world fare any the less? It didn't. Actually, post World War II, the world actually fared pretty well. My basic thesis, friends, is this: that, and this is perhaps a dualism that one must bring up first. There is no denying all the individual and the micro or meso level trauma that Lakhera Sahab and Sinha Sahab spoke about, and Pallavji has been talking to me about, especially for some professional groups, and I'm sure we'll come to that. But if you begin looking at this from a slightly more panoramic macro view, repetitive, cumulative, collective trauma actually builds human race and resilience better than absence of it. And I am convinced about this. I am convinced about this as a person, as a
a psychiatrist and a mental health professional, as a public health professional, and whatever else that I think I try to be. Social scientist, disability activist, rights-based worker. So at all of those levels of existence, especially in the last 25 or 30 years, I've been convinced about this part. And this line of thought that I enunciated in last few minutes has only strengthened that belief of mine when you do a historical analysis. I don't know if such a historical analysis has been made scholarly. I suppose there are great historians and public health professionals who must be doing it or have already done it. I haven't come across. But I must say why that's that belief system of mine is based not only on this across the centuries analysis as I see them, but also in last 25 or 30 years, a lot of my colleagues, my seniors, and the teams that I've been associated with, and the professionals in health and mental health in this country, have actually studied disaster situations, conflict situations, epidemics, so all of those, collective human experiences. It mainly began with 1984 Bhopal. The Indian Council of Medical Research, Dr. Ramalinga Swamy, who was the DG at that time, kind of initiated a lot of good health and mental health work in Bhopal. And then it continued in Latur earthquake, it happened in the Orissa cyclones in the late 90s, by which time I had begun to get involved. And my major involvement directly occurred with the Gujarat earthquake. Incidentally, because I happen to be from Gujarat, but that's possibly only happenstance largely. But Gujarat earthquake, we got into the field in Bhuj and Kutch within the first 2 or 3 weeks. And we were there for scientific study for nearly 9 years. So I'll at some point of time share very brief gist of what we found there. And then of course the tsunami of 2004 and a whole lot of disasters after that. Must also say, and this is a bit delicate, but I happen to have led a health relief team of the central government soon after the 2002 riots in Gujarat. And so for about 2 weeks, I actually saw at the ground level those things. And so directly from my own field work, from the research projects, action research projects that one has been with, and a whole lot of learning individually and from teams, culminated into what, like I was sharing with Pallavji, the National Disaster Management Authority, NDMA, after the Act of 2005, kind of got cracking. And in the last part of the previous decade, first decade, they came up with a series of guidelines, national guidelines, and one of which was on psychosocial support and mental health, and that I was lucky to coordinate. And so what I got to learn from that collective exercise over a couple of years with experts from NIMHANS, ICMR, what have you, everyone, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, is the distillate of what happens to be my philosophy. Human resilience in general, human adaptation in general, is much larger and deeper than most of us can imagine. Socio-culturally, South Asia and Indian communities, without doubt, fare much better than the Western cultures. And we can talk about this, but this is to my mind QED established. No doubt about this at all. The third is that the effects of social, physical health, psychological health, or psychological well-being effects are better managed with less of professional involvement. We psychiatrists, and especially professors of psychiatry and experts, should be required less and should meddle less. Spontaneous, family-based, socio-cultural and other religious, spiritual mechanisms actually help much better. Again, to go back to my one of the favorite models, at all levels, micro, meso and macro.
individuals and families, sure, small groups and communities or neighborhoods, or societies at large. And so the key, it would seem, is this. For any such difficult situation like this epidemic, focus on resilience and the positive aspects, focus on the South Asian and the Eastern strengths which are decidedly much better, and focus on the informal and the semi-formal mechanisms rather than the formal mechanisms, least of all psychiatry and mental health. There is a qualifier to this, third part of the statement that will come to in a minute. But having said that, and that's I think my second part of the major narrative. The third part of the narrative, I must say, and you might find YouTube interviews or those Zoom webinars with me throughout 2001, saying what I have said till now much more assertively than I am saying it now. Through 2001, I was supremely confident that the psychological and psychiatric ill effects are not going to be major and will be all right. Certainly not psychiatric. Psychological distress, need for psychological support, yes, but not psychiatry. Following the second wave in April-May 2021, and the after effects of that and the cumulative collective trauma that the world community went through and we in India went through, and to now the economic slowdown has sobered me. I admit this. My exaggeratedly optimistic, possibly unrealistic, positive outlook about human resilience does need serious questioning. And I have done that enough because of such interactions, because of the clinical practice that one does. And I was jotting down where does my perspective come from. The public sector mental health institution, the private sector mental health institutions that I monitored as State Mental Health Authority of Delhi, besides the state or national policy level stuff. I'm fortunate to be really associated with a lot of NGOs across different issues, so that I keep learning. Like today, I might contribute very little, but I certainly keep adding to my learning. And of course, one has been lucky in last 1 year or so or more to do a lot of events with corporate. So I will as mildly as possible say that when I say what I am saying about now toning down my excessive optimism, that also comes from a variety of sources of learning and not only one or two sources. So to me that also is by now an undeniable fact that while all the positives of human race and of South Asian society and the informal, semi-formal mechanisms and religio-cultural, socio-cultural strengths stand, there is surely a serious need to recognize the mental health aspects of this epidemic in the medium and long term. So your ground level experiences, if I might say, do match with that evolving framework as I think it is in my mind. I also would say that while like in all professions, not all professionals and all professional groups might agree with any one viewpoint, and so it is with psychiatry and mental health, indeed more than others. See, psychiatrists and mental health professionals rarely agree with each other, at least supposedly. So, but about this thought that I shared with you, I think there is a fair amount of consensus. The caution, and this is possibly my most important message for oneself as agents of change in the society and everything else. Don't for God's sake ever contribute to over psychiatricization of the society because of the epidemic.
And that's a huge danger. I mean, some other day, if you would like, we must talk about that, but I have believed in this for 30 odd years or 40 years of my career. And allow me a bit of a tangent to come back to this issue. Post World War II, the capitalist, democracy-based, libertarian, Western model, as I see, predominantly American model of development brought about increased emphasis on psychiatry. To the extent that, to give you a small figure, and I meant not to bother you with figures too much, but the global figure for diagnosable psychiatric disorders is 25%, so 1 in 4. The Indian figures, fortunately, are 1 in 10. So we are only 10%. We are already better than the global average. The American figures are 49 to 50%. Yes, sir. And very credible NIH studies. Not era-gera, you know. National Institutes of Health field-based studies have placed at 49%. Field-based studies have placed at 49%. Of course, the lighter side of it is that, like I often keep asking even American official delegations, and say, if 2 out of 4 people are diagnosable, who diagnoses whom? You know? I mean, as long as it is 10 out of 100 or 4 out of 10, it's still okay. But that's another story. I sincerely believe in what I call this as over-psychiatricization of the society. The American society, largely well-intended, but not necessarily so, and I say this responsibility on record, the psychiatry establishment, the pharma industry, and a few other factors have made sure, especially in last 20 or 30 years, that the dimensions of psychiatric diagnosis and eligibility for drug treatment must keep expanding. If they could, they would have 125 people out of 100 on prescription, not 100 out of 100, you know. That's what I refer to as over-psychiatricization. To put it differently, the over-psychiatricization that has existed in the American society for last few decades, I think, and there's a huge danger for global community, is to turn every small day-to-day experience of life of an individual or a couple or a family or a group into a psychiatric label and start giving medication. In a nutshell, that's my concern about over-psychiatricization. Now, come back from the tangent. What is most unfortunately likely in post-pandemic situation is that we will willy-nilly end up playing into the hands of that American game, over-psychiatricizing. So if you'll please appreciate, if I put it differently one more time, post-pandemic or in last 2 years, we must have all already had our own individual or group-based experiences, family-based experiences of unpleasant nature, traumatic nature. Let's not turn all of them into psychiatric label. To keep saying it ad nauseum, psychological distress, yes. Need for support, need for help, yes, surely. But not psychiatric label, you know. At the same time, again, the caveat to that, you will realize, for a number of reasons, I kind of possibly will keep having caveats within caveats. So, the caveat to that is, as a macro level, social experience, I dare say even national policy level, we do not want to over-psychiatricize. At the same time, we should not forget those persons who were already suffering with mental illness or were disabled because of mental illness, or who might genuinely become so, to be overlooked or forgotten even minimally. So that's the, again, double line that we need to walk. For majority of in India, let's say 90 out of the 100 people, there'll be usual psychological experiences, day-to-day experiences, you'll get over it. But those 10 out of 100 people who have diagnosable mental illness, who might need all sorts of assistance and more, must get that.
The error that governments and societies, and especially we as a society, are likely to make is dual. We are not very sensitive to mental illness related or psychosocial or what is called invisible disability. So we might not actually pay attention too much to those who actually require, and unnecessarily keep beating drums about the society going psychiatric. That's the thing we need to avoid. For majority of us, the trauma did occur and does persist in some ways. Let there be more semi-formal mechanisms to deal with that. Only those who require psychiatric help need to reach psychiatrists. And if I might go back to the NDMA guideline that I spoke about, fortunately, again, that collective group of national experts from all fields agreed to this one part. And we put it there differently. Following any disaster, conflict, long term or short, or epidemic, what may be considered abnormal in usual social situation becomes normative. For example, very quickly to recap, in Bhuj and Kutch region, 99 if not 100% of the people we found in the first few weeks and months having obsessions about aftershocks and the building falling down. In tsunami, we found all the fishermen community having phobic fear about going to the sea. So what the NDMA guidelines we agree to call it is, these are normative reactions to a grossly abnormal situation. And I absolutely love that conceptualization and the phrase. So for oneself, for people around us, at policy level, let's recognize that in a situation that is grossly abnormal, almost any one of us can feel or behave slightly unusually. Let's not make the mistake of giving it a psychiatric label or even a major psychological label. So how do we deal with the trauma which we have faced? That's the next trick to come to, sir. Absolutely. So one, recognize those people who require professional help. Second, for majority of us, be aware of this normal, abnormal continuum. And see if within a few weeks or a few months, as people become all right, if your reactions become all right, you possibly can do it on your own or with help of family and friends. Yes, if there are, what are the indicators of it being abnormal? First red flag, any suicide content of thought. Excessively negative thoughts persisting or suicidal content of thought is one red flag. Second, major sleep or appetite disturbance. 3, gross impairment of occupational or family functioning or day-to-day life, ADL as we would say. If you don't find any of this, let's try and deal with it. Level 1, oneself. Level 2 with family and friends. Level 3 with counselors. Only at level 4 you need to go to mental health professionals or psychiatrists. So if you can, and the other part, as we've been discussing informally, the trouble with our level of psychological and psychiatric sophistication is, unlike the Americans, they have overdone it. We are perhaps underdoing it. And to that extent, the researchers have not been incorrect that Afro-Asian societies are perhaps under-psychologized. And there is much more of stigma to accept psychological distress. They overdo it. We need to perhaps learn to accept psychological distress, to talk about it. The other cliche that I have learned in the last 2 years for such groups or even larger groups is to share. To share is to care. When I say to share is to care, I mean it both ways. One, am I comfortable to at least find some persons or groups where I feel okay to share my distress? But more importantly, in a social mosaic, what will matter is, am I available to somebody else who wants to share?
So sharing is caring is a great motto as long as it's bilateral and reciprocal. And that is what will add to the positive upward spiral in the society. So decidedly, doubtless, there is a possibility of huge distress, trauma, sadness and real life difficulties because of the economic slowdown. And yet, our job collectively and individually and in small groups is to turn this to a positive upward spiral rather than a downward negative spiral. And frankly, for that task, you do not need psychiatrists and psychiatry expertise. For that, well-meaning citizens and counselors and social CBOs are good enough. Mulidharji represents the National Platform for Rights of the Disabled, and so I keep referring to, if some of you are wondering, NPRD and a whole lot of other disability activities groups actually do this much more. Can we open it to questions? I think so. Let me just say one more thing. The thing is that, like Pallavji hinted, हम लोग 2-3 बार बात किया off late. It's okay to open out and share and say, I have difficulties. Again, for last 2 years experience, I am convinced that our population, even the evolved populations of frontline workers, do not very routinely prefer formal help. And let me briefly give you an example. We started from IHBAS, Nimesh did, Tata Institute did, Ministry of Health did ultimately. We started telecounseling service for general population. In fact, after that field visit of ours after the riots. But then we also thought, let's provide a dedicated telecounseling helpline for frontline workers. Media professionals, police and law enforcement and health workers. And so we had 2 counselors available 8 a.m. to 8 p.m. with psychiatry backup and expert backup to say those frontline workers who require telecounseling or support may please reach out. Both the generic general population helpline as well as the dedicated helpline, I am very honest to say, has had very little uptake. Some other day we must talk about this, but the whole lot of these helplines we talk about huge uptake is not actually psychological support, they are logistics, information helplines. The lesson that my colleagues and I have drawn from this is, at the same time, I will mention something. In our own professional groups of doctors and nurses, there were a lot of people who would reach out one-to-one and say, Pallavji, ye ho gaya. And you try and guide them to the helpline, they won't go there. So one more time, for all the pluses and minuses, our people, all of us, seem to prefer more informal, semi-formal mechanisms than formal mechanisms like the Europeans and the Americans. And so I genuinely see less of a role for these helplines as compared to that strengthening, let's say in this group here, 4,000 members that you have, somehow can we create an atmosphere of people reaching out to each other without judgment or without stigma. That bilateral, reciprocal, motto of sharing being caring. So to me, it would seem that if at all we can do that, as Lakrasa was introducing and expressing his distress, I had my mind and say, okay, one can easily say, why not? Let's offer once in a week or once in a fortnight clinic at Press Club of India. And then I realized that's not the answer. You might feel very happy, you might even go ahead and make an announcement and say, Dr. Desai came here and so entity has agreed. Psychiatry and mental health support is available every Friday afternoon or every Friday afternoon alternate. Doesn't work. Will work less, will be acceptable much less. Acceptability and utilization will be much more in the informal, semi-formal mode. So we need to really keep saying it again and again, strengthen the social bonds for psychological support required than formal mechanisms. I hope all that made sense till now. Like Pallavji is saying, please, whatever time we have, I am more than happy to learn what you have been through, what you think can be done.
what can be done for media persons or society in general, and if at all, the role of media persons for the society, if that makes sense. है सर माइक्रोफोन वहाँ पे? हाँ, please sir, please sir. I think that the trauma is more of, it's a financial stress. People have lost jobs, their salaries have been cut down, and that is something which... कोई नहीं, thanks. He will take. Good sir. What I was saying... Economic loss of jobs, economic hardships. Yes. Those are more sort of, concise things that we can talk about. So a person who's earning very well, and suddenly he stops earning, where does he stand in the society? Does his family accept him? Does his friend accept him? He suddenly lost his face. And how does one deal with that kind of a situation? I know it is something that one has to do himself, but how can that be done? Please sir. Please. सर जब से कोरोना आ रहा है जा रहा है अभी भी डर है फिर नहीं आ जाए पूरे देश में ऐसा माहौल सा लग रहा है कि सब लोग बहुत डरे से खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे न खुल के कहीं जा पा रहे हैं भीड़ भी नहीं है मार्केटों में उस टाइप की कभी हो जाती है किसी बारे लेकिन आप जस्ट किसी से बात करिए तो आदमी मन से खुश नहीं है जो पहले वो सोचता था यार मर जाएंगे अभी सोचता है यार मरना तो है जो पहले वो सोचता था यार मर जाएंगे अभी सोचता है यार मरना तो है मतलब उनके मन में आ गया कि शायद कोरोना से ही मरना है या किसी परेशानी से तो ऐसा डर का माहौल हो गया है आदमी बाहर से खुश नजर आता है लेकिन अंदर से खुश नहीं है जो 2 साल पहले था यहाँ से शुरू करते हैं नहीं दोनों आई गेस हाँ सर ऐसा है as a health professional, as a public health professional, I hope you'll all agree, मुझे ये पक्का लगता है कि आप जो कह रहे हैं जो डर का माहौल है, अगर खौफ है थोड़ा या था, वो ज़रूरी था और अभी भी है और उसी ने शायद इतना बचा लिया इस समाज को जितना बचा लिया. So the flip side of the coin, if I might say, that we did reasonably well, if not very well, in the epidemic globally, was because of that. Now, can we, हम लोग health professionals या मीडिया के साथी हम मिलके समाज में now can we create an atmosphere where minimal or moderate caution is still required, but not lose your subjective sense of well-being or happiness. I'll come back to that again. एक चीज़ और सिखाऊँ, but as a scientist and as a, if you permit, as a socially conscious person at best, as I will say, I think this epidemic has taught us a few things, and if you are willing to learn, and that brings me to your part, boss. One, science needs to be respected. Day-to-day existence needs to be governed by science and not by superstitions and all those other belief systems. सोचिएगा जरा, this has been a huge lesson if you are willing to crystallize for long-term effect. Respect science, not just health science but any science. And in India, through vaccination and other programs, we have actually proven that. Second, that behavior of health of individuals, a public health पे आए, last few years and decades, this was becoming clear. I'm sure it's clear to many of us here that your or my health status depends on my lifestyle. खानी पीनी कैसी है, exercise कितनी है, alcohol, tobacco कितना है, stress कितना है, right? Now it has been taken to the next level. Not only individual health depends on individual behavior and lifestyle, communities and societies' health depends on communities' behavior and lifestyle. So that collectivism of the East actually has become stronger, including जो आप और हम बात कर रहे हैं,
maintaining a positive mindset out of a negative traumatic experience. The other lesson I really believe as a person and as a professional we can learn, barring drastic situations that you are describing, is that individuals and groups and human race can do with much less than what we used to spend. That's a very good thought. अपरिग्रह की जो गांधी जी की भावना है ना, वो ये मौका है. Please don't get me wrong. I am not at all overlooking the pain and the trauma of somebody who has lost his job, or as we were discussing, children who have been orphaned because both parents were lost. So there are those extreme situations that require social and governmental response, and I really do believe that that's happening. Like I said, जैसे मैं आपसे कह रहा था, I work with SOS villages, I work with CRY, at least 2 organizations. And I know of their nationwide programs that are looking at this major concern that many of us have had, orphan children. There are very good programs by CRY and SOS villages, specifically about orphan children. So there are those programs that are happening by societal initiative, by government initiative, both together. But at a slightly abstract societal level and individual learning, really सादगी में जो संभव है ना, वो opulence में नहीं संभव है. And again, I'll take the liberty of saying this is not at all the area of my direct self-proclaimed expertise. What I said earlier about over-psychiatricization, I can, with immodesty, claim to be at least somewhat of an expert in saying India and South Asia needs to avoid the American experience of sabko psychiatry kar do. Over-psychiatricization is a global threat, I really think. Next point, at a social level also, this consumerism, hedonistic, acquisitive lifestyle that again the Western model of development was almost indirectly making global phenomenon. Let me say this. Again, I hope all of you will bear with me and see the connect that I'm making at a slightly abstract level, because I genuinely do respect all of you as thinkers and मुझे 20-25 साल से विचार आने लगा है, the more and more I got into public health. Is there a society, is there an example where the socio-technological development happened well, and yet the social and mental health indicators did not go down? Except for a very few Nordic countries and small countries like New Zealand, if at all, I don't think in history or in the current global scenario कोई समाज ऐसा है कि जहाँ विकास हुआ, including hedonism and pleasure seeking and acquisitiveness and bends and rolls and social mental health indicators did not go down. My painful hypothesis is that the development model and the human welfare model that we seem to have followed in the late 20th century has been seriously flawed. We are looking at more material acquisitions and pleasures, superficial pleasures, which are only money intensive. It does not bring wellness or happiness. So to me it seems, again, that individually, small groups, nations like India, societies like India can actually do that course correction for humanity by individual examples also. So I'm not only theorizing, by individual examples can we not demonstrate that one can manage with less? Extremes, no denying. And like I said, admittedly, 2020 was very different in my thought. 21 and 22, I have come to accept that there is significant danger of clinical depression because of economic slowdown. There, जो मैंने पल्लव जी को कहा वही होना पड़ेगा कि अगर मेरी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इतनी बढ़ गई है कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगी, वो अवेयरनेस और सेंसिटिविटी होना पड़ेगी. Which brings a more basic issue as a psychiatrist. Can a psychiatrist resolve that economic problem of that person? No, he can't.
Right? But what the psychiatrists can do, इसमें एक बात बहुत मस्त है. I love this. And again at all levels. Three Idiots में when Rancho says, हमारे गांव में चौकीदार था जो all well बोलता था. And Raju Rastogi says, अच्छा all well बोलने से सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी. And he says, all well बोलने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, प्रॉब्लम को डील करने की हिम्मत मिल जाती. So even for reality based economic or socio-economic or bereavement related trauma of the epidemic, what mental health and psychiatry can offer is symptomatic relief, strengthening your ability to deal with whatever is the situation. Psychiatry or mental health profession cannot solve the problems of real life. But yes, if I were to be so depressed that I might even lose that will to fight back, then the outcome is surely going to be negative. So if I come to you and you are the psychiatrist, you with your counseling and therapy and medicines will help me come up to a level where I can fight back, deal with that situation of loss of a job, my income having suddenly gone half, If I might take the liberty, here again, I've said this on many platforms. I am totally there is a field of what is called behavioral economics. Again, multilateral. I am totally with this idea of vocal for local. If ever there was a time post-independent India mein, this is the best time available for us to make sure that we contribute to our GDP and not fill the coffers of the multinationals. One of the macro level solutions for economic slowdown is that, boss. We need to do that. Sir, please. Anybody else? Please. Thank you, sir. 1 minute. Thank you, Dr. Sir. हाँ You सर. are making a lot of sense. Can you come forward? हाँ मतलब ऊपर बैठ के बोलूंगा यार. हाँ, why not? आराम से. Correct, sir. Please. नहीं. सारी सीटें हमने खाली छोड़ी हुई हैं. चलो 2 मिनट के लिए. भाई फोटो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म के बच्चन साहब के बगल में बैठ जाते हैं. है ना? You can use this for also. I'll do that, sir. Yes, I'll do that, sir. Doctor, I'll do that, sir. Thanks. Not worry. नहीं सर है. Thanks. Not thanks. आप बहुत बढ़िया. नहीं थोड़ा तो Thank you. गले को तर कर लीजिए. प्रोफेसर हूँ तो आदत है लंबा बोलने की. आओ सर. लकेरा साहब और सिन्हा साहब आओ ना प्लीज. सर बच्चन साहब के साथ धर्मेंद्र और अक्षय कुमार भी आ जाए. This is more comfortable I and know, sir. visible. Correct. Okay. Not that Oh, was I it? want- Okay. Right. Not that I want a high platform. नहीं sir, I know. नहीं, I know you too well. I know about you well enough. You're one of the most humble persons. मैं खुद का जिम्मेवार हूँ. मैंने जो किया या दुनिया ने जो किया और मैंने जो पाया, मैं खुद का जिम्मेवार हूँ. Self awareness is a major issue in most of us most of the time. देखिए हम पैंडेमिक को गालियाँ दे रहे हैं 2 साल से. ऐसे भी लोग मिले हैं जो आके खबर देते हैं, पता है अब ये आ रहा है. मैंने कहा कोई और अच्छी खबर भी है क्या? ज़रूरत है आपको फैलाने की. अब ओमिक्रॉन आ रहा है, पता है इसके बाद वहाँ से हांगकांग से. अरे आप क्या ढूंढ रहे हैं, ला क्या रहे हैं? आप अपने अंदर तो झांकिए, आप कौन हैं. देखिए कि जो संदीप ने बात कही ना, मेजर क्राइसिस इज द फाइनेंशियल इशू इन एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली, दैट ही कैन नॉट रन द फैमिली सेम वे. और जो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है वो ये है
कि उम्मीदें कम करो, झगड़े भी कम होंगे। तो हम जहाँ बैठे थे, जो बनाया था, वो श्रिंक हो रहा है। अब देखिए, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो फोटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है, कहते हैं थ्रू यू नो द वर्ल्ड थ्रू योर सेल्फ. When you are aware, your mirror is clean and it receives and perceives what is going on around you. वही सच तो ये है कि पैंडेमिक आया, मारामारी लाया, अखबारें, मैगजीन्स, उनकी सर्कुलेशंस went, they died down like anything, you know. I can quote a figure for the biggest magazine in the country, which is 10 times down now. तो अखबार गए, मैगजीन गए, और फिर जब आप when you were locked down inside your homes, you had to have some alternative. और खबर, अब मेरी बीवी कहती है कि हर वक्त यार तुम चैनल देख सर्व करते हो। भाई 40 साल अगर न्यूज़पेपर मैगजीन में बिताए तो मैं कैसे नहीं देखूंगा कि देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। और कुछ चैनल्स तो जो डेडिकेटेड हैं वो भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। तो देखते देखते जब न्यूज़पेपर बंद हो गए, मैगजीन बंद हो गए, बाहर आना जाना बंद हो गया, तो चैनल्स दे स्टार्टेड फीडिंग यू, दे फीड यू बट दे आर टोल्ड टू बी फैट। दिस इज अनदर गेम दैट हैज बीन प्लेड अनकॉन्शियसली। तो वो एक आदत पब्लिक की बिगड़ गई अखबार मैगजीन पढ़ने की, और घर में बंद और डर के मारे उसका अखबार भी आता है जो कहते बाहर रखो इसको 6 घंटे। अरे जब तक 6 घंटे के बाद आपने अखबार उठाया, सब आपके अंदर तो एनर्जी ठंडी हो गई ना कि ये है। तो जो मैं पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ और जो मैंने अक्सर दोस्तों से शेयर किया कि भाई अखबारों का सब कुछ आधा रह गया, मैगजीनों का। जब वो हुआ है तो वो उसका रिपरकशंस हम पे होना ही होना है, और हमने सब ने बैठ के शायद होना है, और हमने सब ने बैठ के शायद 1.5-2 साल अपने रिजर्व इस्तेमाल किए हैं। पर पैंडेमिक ने एक जो बड़ी कमाल की बात की कि it brought you to yourself. Yes, sir. That's a big point of awareness. That brought you closer to your family. वो बीवी, वो बच्चे, या जिसको तुम डांट के कह देते हो चलो उधर बैठ जाओ, अब बेटे तुम्हारे पास कोई और सिचुएशन ही नहीं है, तुम सब यहीं बैठोगे, and you will face each other. You've got to understand each other. और कितनी शादियां टूट गई क्योंकि जो बाहर हमें रिलीफ मिलते थे ऑल काइंड्स, वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो दिस हैज बीन अ ग्रेटेस्ट सिचुएशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस कि जब सारी दुनिया ही नीचे आ गई। दूसरी बात ये है कि ह्यूमन माइंड इज सच ए लेजी थिंग, जो एक्सक्यूजेस और एक्सप्लोरेशंस का कोई अंत ही नहीं इस दुनिया में। आप अपने लिए जितने मर्जी एक्सक्यूजेस चाहो भर सकते हो अपनी कहानी सुना के, पर ऑन द अदर साइड इफ यू आर एन एक्सप्लोरर ऑफ सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, उसका भी कोई अंत नहीं है। और जिंदगी के साक्षात दर्शन जो होते हैं वो इन्हीं बातों से होते हैं that you are aware of what's going on around you under these bloody circumstances. Photography में अब देखिए कि जिनके पास जॉब है, even writers, वो ऐसे सेटल हुए पड़े हैं उस गद्दी पे। वो गद्दी तो पैंडेमिक ने हिला दी है सबकी कि भाई आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो कि आप इससे बंधे हुए हो और आपका चारा आएगा और आप चारा खाएंगे। This is the major crisis in the society because most of us, most of the time we are programmed human machines, and this is one of the big psychological reasons कि यार मैं सारा दिन तस्वीर खींचा कुछ अच्छी बनी नहीं, क्यों बनेगी भाई?
You are a programmed machine, you've gone with an idea. लोग कहते हैं अच्छा रघुराज जब तुमने ये अच्छी तस्वीर खींची थी तो तुम्हारे अंदर क्या आइडिया था? मैंने कहा मेरे पास तो आइडिया होती ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो नेचर या लाइफ देती है, जो वो ऑफर करती है मैं लेता हूँ। तो जब मैं वो लेता हूँ तो मैं ये भी जो मुझे ज़िंदगी ऑफर कर रही मुझे लेना पड़ेगा, और मैं अकेला नहीं हूँ। हम सारे के सारे, the whole, not even Delhi, not even India, the whole world is down into those dumps where you have to rise again with new awareness. क्यों? उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। तो मैंने जो फोटोग्राफी में सीखा, जिसका मुझे आज भी फायदा है, कि when I am going to go to a specific situation for a specific story, on the way, say I have landed in Bombay, then I have to drive 4 hours to reach the spot. The moment I leave the house, get into the flight, get down and take the car, I am constantly shooting. And in fact, I'll tell you a little later, I constantly shoot. The advantage is very simple, that my mind's eyes are searching. I am not dumped into myself in the pressures that are being caused by nature or by the society or by my neighbors. तो मैं, मेरी बीवी जब मुझसे गुस्सा मैं कभी कर लेता हूँ, कहती pick up your camera, go shoot. You know, You'll be better. that's the biggest release I have. And I tell you, after almost 2 years, I went for 12 continuous days and came back day before yesterday, and very happy man, little physically tired, but very alert, very alive. तो बात ये हुई पड़ी है कि हम जो जहाँ हैं, जो हमें मिल रहा था, वो क्यों नहीं मिलता? That's it. और जो इन्होंने कहा कि उम्मीदें कम करो तो सदमे भी कम होंगे, और ये बापू जो हमारे थे, सच्चे बापू थे, उनकी अटरेंसेस में इतनी सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी थी। और बात तो वही है, मेरा बेटा कहता पापा यू आर सच अ फेमस फोटोग्राफर, you should be going around in a Mercedes. I said, damn it. Why? I said, if I have that kind of money, you know, my farm is about 25 kilometers from here, where those ordinary poor people live. और मैं देखता हूँ उनको, वो हर शाम को जाते हैं अपनी राशन खरीदने, हैं, और वो आलू की सब्जी, आलू ले आते हैं साथ, आटा ले आते हैं, थोड़ा तेल ले आते हैं और नमक मिर्च, और रोज़ खाना बनाते हैं। मैंने कहा मैं उनके लिए वहाँ पे एक ऐसा मिनी हॉस्पिटल नहीं खोल दूँगा, मुझे मर्सिडीज, हिंदुस्तान के क्राइसिस यही हैं, we are to ourselves and we build our own empires, and now those empires are getting shattered, especially with our kind of people, and they are shattered. Man, you got to rise again, all over again with new awareness, and new awareness camera. When I look through the camera, I am alert, I am awake all over again, and I am exploring, and I come to life, to myself, for myself, and I am awake again. तो क्राइसिस जो हैं वो जहाँ पड़े हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब साइकियाट्रिस्ट कसम से, this is not now, but I have always wondered why people look for a psychiatrist, because they've lost self-awareness, simply as that. और उस वजह से now, because of the pandemic, the pressure is unbelievable, multiplied, and all kinds of, everybody is also telling you stories about pandemic as if there is nothing else to share. तो जो हम थे वहाँ से तो हम हिला दिए गए, पर जो हालात हैं, जो दुनिया है, we have to move away from our fixed position and begin to rethink, re-explore, and learn ourselves where to go now. That is the first way of de-stressing yourself. And when you begin to explore
and begin to look at the world all over again, your mental problems disappear for those moments. And you come back to life. So this is what is happening with most people के यार हम तो जहाँ सेटल हुए थे हमारी गद्दी छिन गई है. और गद्दी वाले लोग जो हैं वो देखिए पॉलिटिक्स में भी उनको तकलीफ होती है और देश को तोड़ मोड़ के उल्टा रिवर्स करके नई कहानियाँ सुना के घास बेच रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि वी आर नॉट दोज पीपल, वी आर जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट who's looking for the truth of a situation and not the dictates of your editor or your political bosses whom you would like to please. एक criminality तो हम में भी आ गई है ना. We are not the same honest journalist. It's criminality कि जब judge ही faithful हो जाएगा, जब spiritual guru ही जय जयकार करने लगेंगी सरकार की, तो किसका धर्म बाकी बचा है? हमारा भी धर्म हिल चुका है सबका. तो बात तो अपने धर्म को जानने की है. मुझसे मेरा धर्म तो फोटोग्राफी है, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी ने ही दर्शन दिए है जिंदगी के इंसानों के, और ये मुझे जिंदा रखता है. कसम से मैं कह रहा हूँ, मैं 80 साल का हूँ और जब कैमरा हाथ में लेके निकलता हूँ, आई एम लाइक अ मैड मैन, दीवाना मस्ताना जिसको कुछ होश ही नहीं दुनिया में. एंड आई परसीव एंड रिसीव एंड आई टेक पिक्चर्स एंड आई एम सो आनंदित कि वाह. और इन दिनों भी मैंने ये बात दूसरी है कि मेरे घर वालों ने मुझे कई महीनों तक निकलने नहीं दिया कि तू 79 है और तू पागलों की तरह जाएगा. मेरी बेटियां जो हैं जो छोटी वाली, वो तो पापा के साथ चिपक के रोने लगती थी, पापा यू कांट गो. मैंने कहा यो पापा, इनफैक्ट कि हम वी हैव टू बी लार्जर देन लाइफ इन ऑर्डर टू गेट आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. और बात तो वही आ गई कि मरिए तो मर जाइए, छूट जाए झंडा. यार मतलब कसम से क्या रखा है उसके बाद. Not that you want to die, but if it comes, you can't stop it. And all my friends, my family put together can't make a damn difference to that situation. But be an explorer, learn to change your position, learn to rise again, learn to wake up again to the realities to all around you, because the whole world is under such a stress and loss, and economic stress is same for everybody. तो जब सारों की ये हालत है, वो तो आपको दिलासा दे सकती है ना कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी जब उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्निंग्स इतनी डाउन होगी, अनलेस यू आर ए बनिया रो रहा है बैठा है कि भाई क्या हुआ, कहता है यार बड़ा नुकसान हो गया. मैंने कहा कितने का, कहता 50 करोड़ का. मैंने कहा कैसे, कहता पिछली बार मुझे 150 करोड़ का फायदा हुआ था, इस दफे 100 करोड़ का फायदा हुआ. मैं समझ गया था. Please, for God's sake, जो कमाया नहीं वो नुकसान है. वो नुकसान है. For God's sake, yeah, we rise for ourselves. We come to a new awakening under these circumstances. And I have other ideas also for photography. नहीं, बट बहुत सही कह रहे हैं. Which we talk later. Yeah. मैं एक चीज़ कहूँगा, रघुराज जी ने बात कही, अब सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस जो मैंने नहीं शायद मेंशन किया था लफ्ज़ों में, वो प्लीज़ रजिस्टर करें. आई थिंक बहुत सही है. मेरा जो खुद के लिए लर्निंग है और मानव जाति के लिए जो थोड़ी क्रिस्टलाइजेशन है, वो यही है कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका अभी है, उसमें से ये 2 चीज़ है, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी. जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा. सर प्लीज़, कोई पीछे तो अच्छा. हाँ, साहब एक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो बच्चे यूथ एक तो 2 साल से ऑनलाइन है और चिड़चिड़े कहने का मतलब, और मेन वहाँ वो पढ़ नहीं पाते जो फिजिकल जो पढ़ाई होती थी, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन सर वही है जो अब शुरू हुआ है. मार्च अप्रैल 2020 में बात होने लगी थी न्यू नॉर्मल की, जी अब हमें न्यू नॉर्मल से जीना है.
और हम में से कुछ लोग तब से कह रहे हैं कि 1-2 साल न्यू नॉर्मल चलेगा, उसके बाद होगा हाइब्रिड नॉर्मल। अगेन वही बात है जो रघुराज जी हम कह रहे हैं कि मानव जाति पे ये जो विपदा 2 साल आई वो तो एक सच्चाई थी, किसी के बस की बाहर बात थी। हमारे बाबूजी कहते थे, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, पता नहीं आप में से किसी ने सुना, बहुत अच्छा लफ्ज़, आसमानी सुल्तानी, इवेंट्स दैट आर बियॉन्ड एनीबडीज कंट्रोल, है ना, रेवेन्यू में यूज होता है अपरेंटली, आसमानी सुल्तानी, है ना। तो वो तो सच्चाई थी और सारी मानवजाति को करनी पड़ी। हाँ, हम इंडिविजुअली या कलेक्टिवली क्या ये ट्रांजिशन अब अच्छे से कर पाएंगे। एक और बात बताऊँ, जो रघुराज जी ने बात की उससे मुझे सूझा, आप जो कह रहे हैं उससे भी, टेक्नोलॉजी को हर नई टेक्नोलॉजी को बदनाम करना मानव जाति की आदत रही है ना। एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इज लैम्बास्टेड इनिशियली, एंड सो इज दिस होल माइक्रोचिप एंड द मोबाइल, एंड द नेट टेक्नोलॉजी. We forget that technology, and especially in this epidemic, how useful it has been. आधे मिनट के लिए गौर करें हम सब, अगर ये एपिडेमिक हुआ होता और ये टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल होती तो हमारा क्या हाल होता. It is a very lucky happenstance that the epidemic not only had that background available, human innovation again far exceeded itself. हम सब लोग सीख गए और नए नए इनोवेशंस टेक्नोलॉजी में इतने सारे हो गए कि आज जितना क्लासरूम से लेके प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस टू बहुत सारी इंटरेक्शंस हो जाती हैं. तो वो जो चीज़ है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीवन का हिस्सा है बॉस. दिस एपिडेमिक हैज़ ओनली brought that sharp edge to the focus. The negatives have temporarily exceeded the positives, at least seemingly so. ये हमारा फर्ज रहेगा ना, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मानव जाति की तरफ से, कि हम पॉजिटिविटी को फिर स्ट्रॉन्ग कर पाएं. देयर विल बी, बॉस क्या होगा, एडोलेसेंस के बारे में किसी एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई, isolated cases of somebody who needed help, somebody who went too much out of the way, all this will happen. I hope this is clear. Allow me to say one more time my summary impression. सारी मानव जाति के लिए एक अच्छा मौका है पॉजिटिव चीज़ें करने का, और हमें वो पॉजिटिव मेंटेन करना चाहिए. लेकिन साथ साथ हमारे डिसेबिलिटी वाले साथी निकल गए, जो वो अनफॉर्चुनेट है, अंडर प्रिविलेज है, मार्जिनलाइज है, डिसेबल्ड है, मानसिक बीमार है, या जो ज़्यादा ससेप्टिबल है, जिनको पैंडेमिक का असर ज़्यादा हुआ है, उनकी तरफ तो हमें ज़रूर ध्यान देना. एंड आई मस्ट से आई काइंड ऑफ गॉट कैरिड अवे, फॉरगॉट व्हाट पल्लव जी एंड दिस कॉलीग्स हैड हाईलाइटेड, कि आपकी जो ग्रुप है, खासकर फोटो जर्नलिस्ट की, उन पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ट्रॉमा का हुआ है, उसको हम कैसे डील करें. दैट एस्पेक्ट वी परहैप्स माइट स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन. That I agree with. Perhaps might spend a few minutes on. That I agree with. We did. We got carried away to larger duties as a citizen. But ये हकीकत है. जो 3 मेजर ग्रुप्स है फ्रंटलाइन वर्कर्स के, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, एंड ऑल मीडिया, स्पेशली जैसे पल्लव जी से मैं आप सिखाऊं कि फोटो जर्नलिस्ट, the photo journalist group has actually perhaps faced the heat in the field much more, besides the generic trauma of losing people or ICU experience, or family member was on ventilator, हम बाहर थे, हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है. So all those uncertainties, I really must say that forgive me for my die-hard optimism, not just for myself or my life, but for humanity. मानव जाति के लिए जो मेरी आशावाद की कंपल्सिव फिलोसॉफिकल बिलीफ है, वो अगर आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव के संदर्भ में गैर मुनासिब लगे तो माफ़ी चाहता हूँ. लेकिन उससे बेहतर हल है नहीं मानव जाति के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जिससे कतई हम ये ना कहें कि जिसकी जो पीड़ा, जिसका दर्द था वो कम है या हम उसको नकार रहे हैं. लेकिन let me say something that I have been very fond of saying. I don't know if it's original at all. Pain is universal, suffering is optional. So in this epidemic,
all of human race went through lot of pain. अब हम इंडिविजुअली अपने आप को या हमारे साथियों को, हमारे ग्रुप को कितना सफ़र करने दे ना करने दे, ये काफ़ी हद तक हमारे बस में है. और वो चैनलाइजेशन होना पड़ेगी even of the negative experiences. There has been not just technological, there has been so much creativity that has come out of this epidemic. Forget बहुत सारे मर्द जो खाना बनाना सीख गए. वो तो एक spin off है. But at various levels there have been unbelievable creativity examples. है ना? Can I ask you? Sir, please. Sir, lot of us. I'm sorry. Yes, sir. See, lot of us have recorded some of the most traumatic experiences. Hospitals, cremation grounds, burials. Immediate family also going under so much stress. सर वो इमेज वापस आती है, उसका क्या करें? उसको कैसे डील करें हम? वो हमारे दिमाग में रहती हैं, रात में आती हैं, दिखती हैं. प्लीज सर, थोड़ा बताएं फिर मैं बताता हूँ. प्लीज. नहीं सर. It comes to self-awareness, total self-awareness, selflessness. देखिए वो 84 भोपाल गैस ट्रेजेडी, burial of an unknown child. Mr. Rai, you must have been traumatized. What did you feel? Sorry, I didn't feel anything except the reality in front of me, which is to be captured the way it is to be shared with the rest of the world. अगर मैं ही victim बन जाऊं, तो मैं दूसरों को दर्शन क्या दे सकता हूं reality की? ये जो to carry this pain and suffering that we've gone through, we've seen. देखिए कई दफे अब इतनी उम्र हो गई, पुराने दोस्त मिलते हैं, अरे रघु याद है हम ये क्या करते थे, हम वो क्या करते थे. मैंने कहा कुछ याद नहीं. पूछते हैं रघुराज तुमने 40-35 साल फिल्म यूज की, डोंट यू फील द लॉस ऑफ इट? आई सेड आई डोंट बिलीव इन नॉस्टैल्जिक नॉनसेंस, गुड और बैड. देखो एक सिंपल सी फिलॉसफी बुद्धिज्म जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और साउथ एशिया में और इवन चाइना में और कहाँ कहाँ नहीं गया, उसकी एक फिलॉसफी थी बीइंग हियर एंड नाउ. एंड दैट is a मूल मंत्र for anyone to stay awake, alert and responsible and not get bogged down by the images that you see. इसका एक नुक्ता बताऊं सर, इसका एक नुक्ता माफ़ी चाहता हूँ. इसका एक नुक्ता ये है और मैं न सिर्फ आपसे लेकिन राष्ट्रपिता से भी गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे विचार स्कूल से है एंड विद अपॉलॉजीज टू यू एंड द फादर ऑफ द नेशन. what you are capable of, and I commend that. Detachment, virakti ki bhavna, self-awareness, do your job and leave it there. Not everyone may be capable of. And what we are talking about is those who are not capable of doing so. Third group, those who might be very vulnerable. मैं फादर ऑफ द नेशन को इसलिए रहा हूँ एंड रियली विद द फुलेस्ट रिस्पेक्ट. सी व्हेन गांधी जी एडवोकेटेड सेलिबसी एज ए फैमिली प्लानिंग मेथड, दैट वाज द फ्लॉ. आप रघुराज सर समझें, आपके लिए जो संभव है ना, आप जो बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हो, वो एक हर एक साथी के लिए संभव ना हो. नहीं, पर सच तो ये है कि मूल मंत्र तो जीने का वही है, जागने बेटर का, है, पढ़ने का, खुद को और फैमिली को और दोस्तों को साथ लेके चलने का. और कोई मूल मंत्र है ही नहीं. माफ कीजिए, नहीं, कोशिश वही होना चाहिए. बिल्कुल. देखिए मुझे भी किसी ने दी नहीं. हाँ, आपने खुद देखिए, आई गेट दैट. और हमारी जो नई जनरेशन है, व्हेन आई गिव अ टॉक टू यंग फोटोग्राफर्स, ऐसे मैंने कहा नेचर, आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरे पास कैमरा है, आपके पास कैमरा है, और मुझे नेचर दिखाती है, कहती ये है. मैं कहता हूँ हाँ अच्छा है, पर मैंने पहले देखा यार, ठीक है. फिर वो कहती ये ले ले. मैं कहता ठीक है, इतनी बड़ी बात. कहती ये ले ले. मैं कहता हूँ मैं ले लेता हूँ. तो मैं उससे चैलेंज कर रहा हूँ
आई एम गेटिंग चैलेंज माई सेल्फ। I know that, I understand that. फिर मैं वो लेता हूँ, मैंने कहा तुम बच्चे लोग देखते हो एक चीज़ नेचर तुम्हें कहती है, देखो तुम लेके वो खुश होके घर वापस आ जाते हो। मेरे बाप के पास वो इतना अमीर है, सबके लिए खजाने हैं, तुम इतने में खुश होके आ गए तो तुम्हारा इतना हिस्सा है। तो देखिए जो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंसान की का गहना है, वो इंसान की शान। No doubt about it. उसके बिना अब ना हो, और क्योंकि आप लेजीली जीते गए हैं, पढ़ते गए हैं, मरते गए हैं, उठते गए हैं, जागते गए हैं, now the time has come, pandemic says no more of this nonsense, wake up. That is absolutely agreed. उसके लिए क्या नुक्ता सिर्फ, हाँ सर आप बताएंगे प्लीज सर। डॉक्टर साहब उसके लिए क्या उपाय है? जो लोग सर वही क्योंकि जो मैं रघुराय साहब से डील कर रहा हूँ ना, पता क्या होता है, अलाउ मी अगेन 2 एग्जांपल्स इससे संबंधित है सर, अलाउ मी। पता क्या, आज सुबह मैं सोच रहा था व्हाट्सएप इज अ मच मलाइंड इंस्टीट्यूशन, है ना, बट उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है। दैट इज वेरी नाइस थिंग दैट आई सॉ वन डे, एंड दैट्स पार्टली रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। There are 2 ladies sitting on a park bench, and one is saying to the other, "Why are you feeling depressed? Life is so beautiful." And the other lady says, "Why are you breathless because of your asthma? There is so much of good air around." तो जो गुजर रहा होता है ट्रॉमा से या ट्रॉमा के आफ्टर इफेक्ट से, वही समझता है कि उस पर क्या गुजर रही है। वो इवोल्यूशन जो सर आप तो पहुंच चुके हैं, मेरी कोशिश ये है, सच बता रहा हूँ प्रामाणिकता से, मेरी कोशिश उस दिशा में हो, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ सो कॉल्ड इनवर्टेड कॉमर्स ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, ह्यूमन बीइंग्स हु मे नॉट बी एबल टू रीच देयर। सर सर करेक्ट, श्योर, करेक्ट exposed to stress day in and day out of whatever is happening in the politics around the country, in the situation what the politicians are talking about, and the conflict that is going on, it's happening in the country today. Okay? Yeah. And I want to ask you, like you are a great psychiatrist, your institution has it evolved a system by which it can measure or find out what is the level of psychological well-being of politicians? Because ultimately, मरवाओगे। what they do affects a large majority of people. The policies that they make, that affects, and we have seen it day in and day out. Like Ukraine war right now. मैं पल्लव जी से सुबह कह ही रहा था आते हुए, हमने कहा यार हमने तो ये टॉपिक रखा, अभी यूक्रेन का क्या कर रहे हैं जो आपके कॉलीग्स हैं, यू नो। असर होता है। या ट्रू सर। हम डिबेट्स देखते हैं इसमें आपके टीवी चैनल्स में, वो इतना मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं कई लोग। अलाउ मी करेक्शन, नहीं आप बिल्कुल वाजिब मुद्दा उठा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो मैं रघुराय जी से बड़ी कंप्लीट इज्जत के साथ अर्ज किया, और फादर ऑफ द नेशन इन एब्सेंस, दैट अ वेल मीनिंग और टोटली फिलोसॉफिकली वैलिड आइडिया may not work for the masses and the average person. That there can be no dispute there. And what is the duty of the society or people around, or especially our profession, to see कि उन लोगों की मदद की जाए जो vulnerable है। Now here again sir, एक बार कहूँगा, हर एक प्रोफेशन में, including yours if I might say, including psychiatrist group, so psychiatrist को भी ले लीजिए, the log normal bell shaped curve will always follow. So there will be some people who are exceptionally good at coping, majority will do it averagely, some people will be very poor in coping. ये bell shaped curve हर एक जगह लागू होता है, including psychiatrists. तो आपके ग्रुप में कहीं पे भी हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो वल्नरेबल, या तो वो खुद आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे आप फील कर रहे हो, है ना, इफ़ आई माइट टेक द लिबर्टी, अपनी पीड़ा या आपके साथियों की पीड़ा आप जो टेबल पे रख रहे हो। But I really do think that the biggest help here can be family and friends, and in today's world, friends more than family. अगर हम 4 सहभागी हैं
और अगर मैं वो वल्नरेबल व्यक्ति हूँ जिस पे असर ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे इन साथियों का एक तो जैसे रघुराज जी कह रहे हैं, मुझे एक फिलोसॉफिकल दिशा दिखा दें कि देखो भैया लंबे अरसे में आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, वेरी गुड. एट द सेम टाइम टेम्पररीली माई करंट एंग्विश, वुड यू प्लीज ट्राई एंड आइडेंटिफाई एंड शो मी द करेक्ट पाथ कि कैसे किया जाए. और उसमें सर सबसे ज़्यादा है एक्सप्रेशन शेयरिंग. ये पल्लव जी की हमारी जैसे और गुफ्तगू हो रही है और बढ़ता जा रहा है. इन्होंने जो प्रेशर कुकर ऑफ माइंड बताया शुरू में, ये मैं कंप्लीट एग्रीमेंट में हूँ. बहुत बारी मैं टीवी पे न्यूज़पेपर में कह चुका हूँ कि प्रेशर कुकर मॉडल ऑफ द माइंड इज द सिंपलेस्ट बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो जो भाप है ना, उसके निकलने के एक तो वो होना चाहिए एवेन्यू, सेकंड सेफ्टी मैकेनिज्म भी होना चाहिए. इवन इफ द स्टीम इज बीइंग लेट आउट रेगुलरली, समटाइम्स इट कैन गो आउट ऑफ द वे. नाउ फॉर अस, फॉर ह्यूमन माइंड, व्हाट आर दोज मैकेनिज्म्स? वन, हैव अ कांस्टेंट स्टीम रिलीज मैकेनिज्म. लिख के, बात करके, कविता करके, रिलीजन, म्यूजिक, व्हाटएवर गिव्स यू. एंड सेफ्टी मैकेनिज्म कि अगर मेरा स्टीम रिलीजिंग मैकेनिज्म फंक्शनल भी है, लेकिन ओकेजनली जैसे आप कह रहे हैं अंदरूनी हालात या बाहर के हालात इतने खराब हो जाएं दैट इवन द बेस्ट ऑफ द पर्सन में क्रैक अप. व्हाट इज टू बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उस वक्त हमारे पास जरूर आइए, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेज में. आई एम नॉट वन ऑफ दो साइकियाट्रिस्ट हु इज कीन टू सेल साइकियाट्री एट ऑल, है ना. तो साइकियाट्रिस्ट के पास, मेंटल हेल्थ सर्विस के पास जाइए जब वो क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करें. जो पल्लव जी ने पूछा था वो इंडिकेटर्स हैं. बट रियली एक्सप्रेशन, वेंटिलेशन, शेयरिंग, कंस्ट्रक्टिव चैनलाइजेशन आर दी ओनली वेज. प्लीज सर, प्लीज सर. अच्छा, मैं उसके बाद पीटीएसडी पे आना चाहता हूँ, ट्रॉमा पे. हाँ सर, ये सॉरी एक बार करूँ. सॉरी, जो पल्लव जी ने मुझे हिंट भी किया, आई थिंक ये जो बात है ना, रिपीटेटिव इमेजेस वही आती हैं. पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक शब्द आपने बहुत सुना, लिखा होगा, है ना, पढ़ा होगा, पीटीएसडी. अगेन ब्रीफली, आप लोग तो मीडिया में जर्नलिस्ट हैं, मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन प्लीज़ गौर करें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फ्रॉम कोरिया टू वियतनाम टू एवरीथिंग दैट हैज़ फॉलोड टिल नाउ, अमेरिकन्स हैव फॉलोड देयर पॉलिसी ऑफ सेंडिंग देयर यंग मैन एंड नाउ वीमेन टू द वॉर. The collective social and national guilt of that keeps the idea of PTSD alive. PTSD is a socio-political economic concept. I don't know if anyone of you has realized, next to Walmart, Veterans Administration, VA, is the biggest employer. तो PTSD नहीं होता है ये नहीं कह रहा हूं मैं. हम में से किसी को भी बहुत ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो तो कुछ समय तक ख्वाब में वो बात आएगी, इमेजेस शायद होंगे, परेशानी होगी, लेकिन खुद की मदद से या काउंसलिंग से एंड इन रेयर इंस्टेंसेस दवाई से वो मोटे तौर पे ठीक हो जाता है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू बी ड्रॉन बिटवीन एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एंड लॉन्ग टर्म पीटीएसडी. एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन ह्यूमन है, जैसे मैंने नीचे जो कहा था, नॉर्मल रिएक्शन टू अ ग्रॉसली एबनॉर्मल सिचुएशन. मैं आपको बताया ना, अर्थक्वेक के बाद आई डिडंट कंप्लीट दैट. भुज कच्छ में 99 if not 100% ऑफ द पीपल हैड क्लासिकल ऑब्सेशंस. एंड गुजरात सरकार उस वक्त की, हमारे उस वक्त के डॉक्टर, हमारी आईसीएमआर की टीम, वी रिएक्शन से इनको दवाई शुरू कर दी जाए. फॉर्चुनेटली आई सेड लुक लेट्स वेट, शुरू कर दी जाए. फॉर्चुनेटली आई सेड लुक लेट्स वेट फॉर 6-8 हफ्ता वेट कर लेते हैं. लेट्स नॉट स्टार्ट दी एंटी ऑब्सेशनल मेडिकेशन. वी डिडंट. मेजॉरिटी ऑफ देम ओवरकेम दैट. सो जो नेचुरल कोपिंग है ना, वो मोस्टली वर्क करती है, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल हु माइट नीड हेल्प. मैं पल्लव जी से एक बार शेयर किया, अलाउ मी टू शेयर दिस वन डेटा सेट. गुजरात में अर्थक्वेक के बाद वी फॉलोड अप 35,000 पॉपुलेशन फॉर 8 to 9 years. नो पीटीएसडी. तो पीटीएसडी का सर बहुत ज्यादा हवा मच गया है अमेरिकन साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट के कारण. यू नो, उनके संदर्भ में, जैसे मैंने कहा, इट इज अ मेडिकल कॉन्सेप्ट, बट इट्स मच मोर ऑफ अ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. यू नो,
तो PTSD रेयरली अगर होता भी है, एक दूसरा मुद्दा, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में वी डू सी रेयर PTSD. Like everything else, the course and outcome of PTSD in India is much better. So please don't confuse a small ligament tear to be a major fracture. मैं एग्जाम्पल वही दे सकता हूँ कि जो आपने बताया ना सर, व्हाट यू रेज, कि भाई आपने जाके देखा, सी बार बार कहें रघुराय जी मस्ट हैव बीन शुरू से, एंड ही हैज परहैप्स इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स टू बी एबल टू बी डिटैच्ड एंड सी इट एज एक्सपीरियंस. मैं एक बात कैसे होगा सर? हाँ, कि आपने हम पे जुल्म ढाया क्या? हाँ, कि आपने मेरी बातों को फिलॉसफी कह दिया. नहीं कहता ही नहीं. देखिए हाँ, देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मैंने जो भी सीखा है कैमरे के थ्रू सीखा, करेक्ट, और जिया. और मेरा जो जीना है, मैं कोई अद्भुत सिचुएशंस में नहीं जिया हूँ. इनके साथ sure. इनके सीनियर्स के साथ भी लड़ा हूँ, ऑफिस में एडिटर्स के साथ भी लड़ा हूँ. हैं, और मैंने जो सीखा है वो रोजमर्रा की जिंदगी जी के सीखा है. ग्रांटेड, टोटली एग्री. You don't call it philosophy. सर मैं इज्जत दे रहा हूँ. अच्छा, एक बात भी है, एक बात भी है. पर वो मेरे भाई साहब जो बैठे हैं, हमारे Peter is the ruler. You got nothing to say about it. You got no choice. You better bear it. I'm telling you, my friend. सर वैसे राय साहब एक बात कह दूं, most good philosophers do not realize that they're giving good philosophy. ये भी सोचिए सर. आप नहीं, सच में मैं बड़ी सच ही कह रहा हूँ, सच में. सर प्लीज सर प्लीज. सर नहीं, he is just toilet break. Social norms for the past 2 years, Sir. if you have seen, have broken, have been demolished. New norms are being rewritten. पहले आप देखिए, एक तो जो ये बंदिशें हैं कि कमीशन में 10 लोग जाएंगे, 20 लोग जाएंगे, मैरिजेस में 50 जाएंगे. मैरिज इज अ सोशल एनिमल. हर कोई उस उच्च स्थिति को नहीं पा सकता जो रघुराय साहब जिसकी बात की, जो हमारे विशेषज्ञ मिश्रा ने भी कहा, कॉमन मैन के लिए वेंटिलेशन की जो आपने बात की, वो आप देखिए अभी होता है किसी का भी सडनली सी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज नो मोर, तो क्या होता है व्हाट्सएप की आपने बात की सिर्फ होगा माय कंडोलेंसेस, बट इमेजिन द ट्रॉमा दैट फैमिली इज गोइंग थ्रू. They don't even have help for cremation. So these social norms are being rewritten during this pandemic time. So coping with this new reality, T.S. Eliot had said long ago that humankind cannot bear too much of reality. Not me, T.S. Eliot, celebrated poet, had said that. And it is coming true. I mean, you can't bear with all this trauma. We have seen in our own lesson, 70 of our colleagues, we never imagined we'll lose them in the past. उनके चेहरे याद आते हैं. 70 उनके चेहरे याद, और साथ बोर्ड पीछे लगाए हमने. यहाँ Many of them photographers, many of them who were holding mics, here I must say, government officials, so many doctors. डॉक्टर्स गए, हमारे साथ ही गए. सर ये एक तो है, जो फ्रंटलाइन वर्कर ग्रुप्स हैं उसमें मॉर्टालिटी, एंटी डेथ रिलेटेड और आईसीयू रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैव बीन मच मोर. सो उसकी वल्नरेबिलिटी जरूर रिकग्नाइज की जाए. डॉक्टर्स, नर्सेज एक ग्रुप, पुलिस ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सनल, स्पेशली फोटो जर्नलिस्ट एंड दोज हु आर एक्चुअली इन द फील्ड. उस कंसर्न को रिकग्नाइज किया जाए, लेकिन बॉस और कोई चारा है नहीं. द ओनली वे आउट नाउ is to cope with it and reduce the depression. एक चीज़ और आपको जरा ध्यान करा दूँ, टेक्निकल थोड़ा हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ. जो मैंने पहले कहा ना कि जो रेट्स हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के, ग्लोबल फिगर्स आर 25%, अमेरिकन फिगर्स आर 50%, इंडियन फिगर इज 10%. एक और फैक्ट जो बहुत एस्टैब्लिश्ड है, ट्रीटमेंट गैप
वो जो 100 में से 10 लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से प्रभावित हैं इंडिया में और जिनको इलाज मिलना चाहिए, उसमें से सिर्फ 2 लोग इलाज तक पहुंचते थे. सो ट्रीटमेंट गैप वॉज 80%. मेरा ये दावा है, डू आई हैव डेटा टू सपोर्ट दिस? नो, आई डोंट, एंड आई थिंक इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. जो हम डिप्रेशन या सुसाइड देख रहे हैं ना अपने साथियों में, वो 2 ग्रुप से कंट्रीब्यूट होता है. एक तो है कि वो जो अनडिटेक्टेड केसेस थे, तो आपको और हमें लगा कि यार ये तो बड़ा सही लग रहा था, इसको क्या हो गया? ओके. सेकंड इज दोज हु माइट हैव टेकन ट्रीटमेंट अर्लियर, इट वाज क्वाइट रिकरेंस और रिलैप्स हो गया. सो मैं पूरी जिम्मेवारी से आपके सामने रखना चाहूँगा कि उस एक्सपीरियंस ने पूरी तरह 100% उस डिप्रेशन को या सुसाइड को या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को कॉज किया, ये अभी तक नहीं है एविडेंस. एविडेंस अगर है तो दूसरी तरफ है कि जो वनरेबल थे, जो पहले इलाज करवा चुके थे या जो इलाज के लायक थे लेकिन इलाज के लिए नहीं आगे आए थे, हमें ऐसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस स्ट्राइक बहुत करता है. सी डॉक्टर कम्युनिटी भी वैसी बातें हुई जो आप कह रहे हो, भाई वो जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट इतने गुजर गए, इतनों ने सुसाइड कर लिया. दिस इज व्हाट आई वुड कॉल, पल्लव जी, यू आर सो फैमिलियर विद द साइंस इश्यूज, दिस इज आर्टिफैक्चुअल. इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन कि बहुत सारे लोगों को हो गया. इट वॉज अनडिटेक्टेड और हिडन. तो होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम ये बातें करते हैं, जो बाकी जो लोग हैं उन पे भी असर होता है. जैसे आपकी पीड़ा में ऑलरेडी देख रहा हूँ, स्पेशली इन योर ऑफिशियल पोजीशन, यू माइट इवन फील रिस्पॉन्सिबल कि यार हमने इनके लिए कुछ करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया. बट दिस वॉज पॉसिबली, मैं ये कह रहा था सर कि अक्सर ये हुआ डिप्रेशन और सुसाइड जो इस पीरियड में हुआ है ना, दिस वेर केसेज हु वर अनआइडेंटिफाइड, अनडिटेक्टेड, हु केम फोर्थ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. दे वर नॉट नेसेसरली ऑल कॉज्ड बाय द ट्रॉमा. यू नो. तो सर प्लीज ऑन कर लो. आई थिंक निमिष भाई नहीं, थोड़ा फास्ट करिए. हाँ, एक जो इशू आया था वो पैंडेमिक का बड़ा यूनिक डिजास्टर सिचुएशन का था. सी हम लोग डिजास्टर कवर करने जाते हैं, अर्थक्वेक किया, सुनामी किया कवर, उसमें हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल क्लैश नहीं होता है. जब हम पैंडेमिक कवर कर रहे थे, घर वाले कहते हैं, जैसे रघु राय ने कहा कि मत जाओ, घर वाले कहते हैं नहीं जाओ, लेकिन एक तरफ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का दायित्व बनता है, जैसे रघु राय ने कहा 84 में इमेज देना था तो देना है. तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं या जो ट्रॉमा की कंडीशन है पीपीई किट में लोगों की, वो हमने डॉक्यूमेंट की. लेकिन जब सुनामी और अर्थक्वेक करते हैं तब हम वो घर में नहीं लाते. यहाँ तो वो वायरस हमारे संग वापस आ रहा था. वो एक जो प्रोफेशनल और पर्सनल एक अंतर्द्वंद था, उसने बहुत माने काफी हद तक तोड़ लिया है. जैसे रघु राय साहब ने खुद बताया, अपना बेटी ने लिपट के रोने में, वो घर में हमने भी फेस किया, आपने भी किया होगा. जब कवर करने जाओ तो एक बार घर के अंदर जब घुसते थे तो लगता था जाए कि ना जाए. लेके आ गया वाला. ऐसे भी दोस्त हुए जिनको तो इसको कैसे डील करें? घर में खाना जो है उसको कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर उसके खाने की प्लेट रख देते थे और वो उठा लेता था. ऐसा भी हुआ है. और ये बात तो आपकी बड़ी वो है कि दूसरा घर में चला आया, और इसी डर से मैं तो कहता हूँ आई हैव ऑलमोस्ट मिस्ड इट. और मुझे फिर भी 2 दफ़े हो गया कोरोना. ओके. और मैं, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, सच अ बिगेस्ट न्यूज़ स्टोरी which has been ongoing affair of this pandemic nonsense, जिसका मेरे पास कोई लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है. और मुझे इस बात की शर्म है. जो भी हुआ मैं अलग रहा, थोड़ा थोड़ा चुपके से मैंने किया है. और ये पल्लव जो हैं ये रेगुलर थे. ऐसे लोग तो जिन्होंने परवाह नहीं की है, और घर वाले भी इनको कैसे घुसने देते, पापी है साला. ये घुसा जाता भी रहा डेली और घर भी आता रहा.
लेकिन मुझे लगता है समाज को और सरकार को, समाज को यकीनन, मुझे तो है, समाज को है, ये जो 3 ग्रुप में बार बार गिनवा रहा हूँ ना, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस एंड एनफोर्समेंट एंड मीडिया पर्सन्स, हम बैठे जो पहले बात कर रहे थे अनौपचारिक रूप से, इस एपिडेमिक में रियलिटी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और न्यूट्रल, इट इज़ योर ग्रुप दैट ब्रॉट टू दी सोसाइटी. So, duty well done, duty at a high price, very high price, agreed. Now that at this point of time needs to be seen only in the context of, मैंने पहले कहा, वो vulnerable थे, वो साथी हमारे दो प्रकार की है, प्लीज़ गौर करें. मैं रघुराय साहब से यहाँ पूछने की जरूरत करने लगा, लेकिन हम बाद में पूछेंगे. See, at 80, like he's saying, if he has kept well and with 2 infections, I presume he must be lucky not to have any of the comorbidities. See, diabetes, kidney, hypertension नहीं है तो इन्फेक्शन फिर भी गुजर जाएगा. तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी वो हुई जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी. सिमिलरली साइकोलॉजिकली वल्नरेबल जो थे, जिनको फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन की थी, या पहले डिप्रेशन हुआ था लेकिन अनडिटेक्टेड हुआ था, ट्रीट किया, समाज में किसी को पता नहीं है, वो लोग इसकी चपेट में आए. हमें दिख रहा है वो, यार हमारे तो 70 साथी वी लॉस्ट. तो एंड लाइक आई रियली एम्पथाइज कि वो एक सेंस ऑफ गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने इसके लिए कुछ किया नहीं. यू कुड नॉट हैव पॉसिबली डन. वी ऑल आला पर हम मिलकर शायद कुछ और ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टुवर्ड द एंड ऑफ द एपिडेमिक, ऑल द मोर द ओनली आउटलुक कैन बी पॉजिटिव बॉस. सर प्लीज. राकेश सर मैं एक के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं. किसके बारे में? सच और डर. सच और डर, हाँ. वो ऐसी चीजें हैं जो हमें बड़ा इफेक्ट करती है, जॉब में, घर में, बाहर निकलने में, कहीं पे भी. आपने 3 इडियट्स का एग्जांपल दिया, तो मैं आपको एक शोले फिल्म का देता हूँ. तो उसमें गब्बर सिंह ने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया. ठीक है, लेकिन पेंडेमिक के दौरान चला कि जो डरेगा वही बचेगा. आजकल हमारे प्रोफेशन में एक सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि सच लिखना, सच बोलना, वो सामने वाले को बड़ी दिक्कत देने लगता है. उसकी वजह से न्यूज़पेपर ऑनर्स जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है. वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर डालते हैं, भाई आपने ये क्यों लिखा. आप कहेंगे मैंने सच लिखा, लेकिन पॉलिटिशियन को समझ नहीं आया. अच्छा नहीं आया, समझ तो आया, अच्छा नहीं, उसको मतलब वो रास नहीं आया ना. रास नहीं आया. किसी के भी प्रेस क्लब के अगेंस्ट अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लखेड़ा जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा. वो कहेंगे भाई, दूसरे लोग बोलेंगे भाई क्यों किया, वो आपको सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे. वैसी चीज ऑफिस के अंदर है. तो आदमी इसमें करे क्या. सच की बात आती है. एक बार नवजोत सिंह सिद्धू से मैंने कहा कि आप सच को बड़ा बोलते हैं कि सच से बड़ा कुछ नहीं होता. माफ कीजिएगा, इस बात का तो डॉक्टर साहब के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है. करेक्ट सर, तो बताइए. करेक्ट नहीं है, एक ही है, प्रैग्मेटिज्म. अगर ये पोस्ट पे होते, रिटायर नहीं हुए होते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन अब ये बोल सकते हैं. नहीं सर, तब भी ऐसे ही था. और फिर गुजरात से हैं ये. मेरे पास नहीं, बट उसे नो नहीं मैं आपके पास के सर, पास ही रहता हूं. सर. और मैं एक बार आपके साथ बैठ के, जब आप जॉब में भी थे, 1 घंटा मेरी बातचीत हुई तो सचिन तेंदुलकर जब अपना 100th सेंचुरी, मुझे लग रहा है कि हमारी बात हो चुकी है. काफी देर आपने 1-1.5 घंटा उस पर बताया, राइट. कि कैसे औरतें सुई धागा डाल लेती हैं, लेकिन हाँ. वो एक चांद की रोशनी में एक त्योहार होता है, करेक्ट सर, उनको दिक्कत आती है डालने. करेक्ट, जो कंपटीशन होता है, करेक्ट सर. तो कंपटीशन का जो प्रेशर होता है, तो हमें मीडिया के लोगों को एक बड़ा प्रेशर ये है, एक तो सच चीजें सामने लाने का, दूसरा एक डर जो है. हर चीज में पहले क्या होता था कि अगर हमने कोई गलती कर या हमारे किसी रिपोर्ट पे एडिटर को फोन आ गया तो एडिटर बोलता था यार देखो थोड़ा सा बचा. आज एडिटर कहता है कि अगर ऐसी चीज दोबारा कर दी तो भाई नौकरी से निकाल दिए जाओगे. सीधा मतलब आजकल ये मैसेज आता है. पहले निकाल दिया जाए और निकाल भी दिया जाता है. ये नहीं है कि वो वैसी वाली बात कहने की. और एक सच की बात है कि जैसा आपने कहा कि सच पढ़ते आए हैं बचपन से कि सच बोलो. सब कुछ बड़े लोगों ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा, सब कहा. तो एक दिन मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा था, आप कहते हो भाई सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता. तो एक दिन मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा था, आप कहते हो भाई सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता. हम भी प्राय होटल में बैठे थे, हम दोनों ही थे. तो बड़ी चीजें बोलते थे. मैंने कहा यार आपने मैच फिक्सिंग के दौरान WTA पे एलिगेशन लगाए थे. एक पर्सनल बातचीत में मनोज
जादूगर आदमी है, इतना बड़ा एक्टर है कि दिलीप कुमार को फेल कर देता अगर ये वहाँ होता तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसने इस तरीके से नाटक किया जबकि मेरे सामने ऑफर हुई थी। तो उसने कहा शायद तू भी था वहाँ पर, उसने कहा हाँ था यार, लेकिन मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली तो इसके मेरे ऊपर बड़े एहसान है। तो मैंने उससे पूछा था सिद्धू से कि भाई आपका फिर सत्य कहाँ जा, इतना सत्य सत्य पे बोलते हो। तो उसने एक बात बोली जो मुझे थोड़ा सा इंप्रेस कर गई। उसने कहा कि वो सच जो होता है आदमी अपनी बीवी के साथ बहुत सी बातें करता है, लेकिन कोई उससे पूछे भाई कि कल तूने बीवी के साथ क्या क्या बातें की है, तो वो माइक पे तो नहीं बोल सकता है कहीं पे जाके, वैसे वो सच बोलता है, लेकिन अपनी बीवी के साथ की भी बातें तो माइक पे नहीं बता सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके भाई मैंने कल ये बातें की अपनी बीवी के साथ। तो एक जो सच वाली चीज है ना वो बड़ा इफेक्ट करती है। अगर हम अपने एडिटर को बताएं कि आप ये लिखने जा रहे हो ये थोड़ा सा गलत है, फैक्चुअल गलत जा रहा है, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट तो कर लेगा, उस समय ठीक कर लेगा, लेकिन एक दिल में उसके बैठ जाएगी कि यार ये बंदा क्या मुझसे 20 साल छोटा उम्र में और मैं इतने साल से एडिटर आ रहा हूँ, ये मेरी गलती निकाल के बता रहा है मेरे को, तो वो आपको जॉब में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। आप ऑफिस आ चुके हो, आपकी हमारी बातचीत हो चुकी है, तो आपको मेरा ये कहना और शायद ठीक लगे। अगर आदर्शवाद और यथार्थ के बीच कोई पोजीशन हम किसी समय पे चुनते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Idealism and pragmatism is always an ongoing battle. When any one of us takes a certain position at a point of time on that spectrum, one has to be ready and willing to pay the price for it, and I paid enough price for it in my life. सच बताऊं, in many ways. Sir, please, of course, great. कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग खामोश हैं और सोच रहे हैं कि सच बोलेंगे जब सच के कुछ दाम बढ़ेंगे। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, करेक्ट। ये एक देश है जो आज की दुनिया का, दूसरा मर मिटे थे वो वतन पे, मर मिटे थे वो वतन पे, ये मिटा देंगे वतन। ये बातें जो हैं जो शायरी में आती हैं कभी कभी, उनमें इटर्नल ट्रूथ आता है जो शायद हम डिटेल में नहीं बोल पाते और शायद 2 लाइनों में कह के घर वापस चला जाता है और बीवी से पिटता है और फिलोसॉफिकल बातें कह देता है। बट एक चीज और कहूँ, सॉरी सर, एक मिनट, सॉरी, लेट मी कंप्लीट। जो मैं इनको कंप्लीट कर लूँ जो इनका जवाब। सॉरी, रघुराय साहब ने जो बात कही बहुत सही गई शहरों में। सर ऐसा है, मुझे विचार आया, अगेन पता नहीं क्यों आज गांधी जी का संदर्भ ज़्यादा आ रहा है, बट नीडर है। गांधी जी की सत्य की फिलॉसफी शायद अनादिकाल तक रहेगी, बाकी जो कुछ भी नुक्ते चुने जाएं, लेकिन गांधी जी विल बी इक्वेटेड विद द आइडिया ऑफ ट्रूथ। एंड यट इफ आई मे से, if ever there was a pragmatist, it was गांधी जी। तो सत्य और यथार्थ, truth and pragmatism, at least that one person combined beautifully, अगर हम गौर करें। सबसे आखिरी मेरा मुद्दा, आपने जो सवाल पूछा सर, हर चीज़ में इंक्लूडिंग जो भाई साहब ने बात की, मेरे लिए सामाजिक रूप से मेंटल हेल्थ में जो सबसे महत्व लगता है, जो हम स्कूल में ऐसे लिखते थे और हम सब स्कूल की लर्निंग को ना गाली दे के भूल जाते हैं। मुझे इसका सच में बड़ा मलाल है। जैसा भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था मकौले के कारण या वॉट एवर एल्स, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल याद करें, हम सबके लिखवाया जाता था कंपल्सरीली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में विश्लेषण करें। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जीवन का हर एक मसला कॉन्टेक्सचुअल है। आपकी मेरी लाइफ में, इनकी करियर में एडिटर से झगड़ा हुआ, भाई मेरे जीवन की क्या स्थिति है, मेरी क्या करियर पोजीशन है, मेरी क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उस एडिटर से मेरी कितना रिश्ता है, वो पावरफुल है या नहीं है, ये सारा संदर्भ तो होना ही पड़ेगा ना सर। ऑलमोस्ट नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो हर एक चीज़ जो आप और ये भाई साहब दोनों जो अपनी प्रोफेशन रिलेटेड एंग्विश शेयर कर रहे हैं,
उसमें there can only be one choice made, and second in the context. हाँ सर. ये भी कहा जा सकता है कि ये भी गुजर जाएगा. Oh, this too shall pass, पक्की बात है सर. और देश सर लो. सॉरी. ऐसे. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं स्ट्रेस का इनको लगा है. I think one of the part if you go to yoga, just yoga में अगर सिर्फ कपाल भाती और वो आधा घंटा लोग करते हैं, तो I think ये हमारे जो सीनियर्स हैं जो उससे हैं उनको भी बेटर रहेगा. और जो हम लोग उस फील्ड में जाते हैं और जो ऑलरेडी थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम में भी है, तो वो एक योगा के अलावा कुछ नहीं है. उसमें सिर्फ स्ट्रेस आउट को भी अगर 15 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं तो आई थिंक वो उसको आपको भी इंक्लूड कराना चाहिए अपने. कोई डाउट ही नहीं है सर. We have in our midst Ajmal Jami. Ajmal is a veteran videographer. He saw Kargil more closer than anybody else did. Seen the tsunami. But I think he's very shy. He doesn't speak. He's been my camera person on so many stories. He uplifts any story I have done from ground X to ground 10X. But what is his coping mechanism? And people should know he survived a helicopter crash in which Badmash? Not Kingfisher का मालिक who Malia deserted him. अब बताओ say how did you cope with stress? ये तुम इतने शायर हो तो कैसे चलेगा? शायर में थोड़ा सा सर आ जाइए ना. I have to try it. हाँ. कारगिल में दराज की शाम भी बताना कैसे बचे. आगे आ जाओ थोड़ा सा. जामी और आगे. फ्रेम में आ जाओ. हाँ जब फ्रेम में. अच्छा ये एक्चुअली मैं क्या नकार खाने के आगे तूती बोलूँगा. नहीं सर पास लेके थोड़ा. See the whole point is और ये चीज़ अक्सर हाँ यहाँ आ जाए और माइक्रोफोन बात. There are a lot of younger members here, and I think a lot of people go through this. I'm obscuring you. अक्सर everybody is pitchforked into situations for which there is no psychological preparedness internally. सभी के साथ हुआ है, हम सब के साथ हुआ है. We've all been into that. Institutional awareness तो कोई zero. I think that still continues. None. I'm not sure if there are any news organizations which even recognize that, even remotely, even now. It could range from anything as simple as sending a team to Ladakh and not even recognizing that there would be oxidative stress and you could land up in a hospital, possibly even die, but there's a pressure to perform. Many people do, many people cannot. Pitchforked into scenes of extreme violence. अब वहाँ पे आप जिन चीज़ों को देखते हैं, you bear witness to that. You try and cope with it internally to the best that you can. आप सबके अंदर, हम सबके अंदर MCB हैं, internals जो trip off कर जाते हैं. Maybe they are of different ratings. Maybe some people are. That is called awareness. I know. बस वही सर. लेकिन ठीक है, you see, this is a great alienation device. We function, but we function with a screen in front of us. So essentially we are escape artists. हम लोग हैं उसमें और नहीं भी. तो वो चीज़ तो खैर है. And especially for the younger members here, I mean, you would probably throw some light on how to go into these situations. Everyone here has been through this. Maybe we've all worked our own mechanisms of how to cope with this. But since this is being taped, we'll probably go to a lot of people who are not here. So, what is it? What can you cultivate? What is the framework with which you can go into a certain situation? Come back with minimal scars. Tsunami की आपने बात की, भूज की बात की. I mean, we all have our images. I mean, there's an image of a man who was scrabbling through Ahmedabad. There was an earthquake which toppled the school building. अब उसके जो अंदर, there was, I still remember a man.
his fingernails were torn off, dhoti, and he's bleeding, and he's scrabbling through the debris, trying to pull out some kids. Yeah. So, you know, those things like this, those images stay within you. These are little nicks, say to say, on the post. अब वो रहती हैं, अब उसके ऊपर हम खोल चढ़ा लें, ठीक है. और अक्सर ये चीज़ होती है कि एक इंसिडेंट है, खोल चढ़ गया, एक और इंसिडेंट है, खोल चढ़ गया. अब ये सब हमारे अंदरूनी पिटारे के अंदर घुसता जाता है. लेकिन क्या ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में कि वो सारा खोल जो है वो डिसॉल्व कर जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स यू नो मर्ज कोलेस टुगेदर. बिल्कुल. व्हाट हैपेंस देन? एंड उस चीज़ का इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस ज़ीरो. अगेन आई से मेनी ऑफ अस वी हैव कम बैक इंटरनली शैटर्ड. तो हम लोग अंदर से कीमा बना देता है. लेकिन आप लोग आते हैं और वापस आते हैं और फिर वापस जाते भी हैं और जाते भी हैं. ठीक है. अभी यू मेंशन्ड अ क्रैश. आई थिंक उसके 6 महीने के बाद आई टू गो ऑन अ हेलीकॉप्टर अगेन. इन द फर्स्ट वन, लकी टू बी हियर टू बी स्पीकिंग. Helicopter broke in 4 parts. It didn't catch fire. Miracle. I have a rod here. So functional. ये तो चलता है. इसमें ज़रा दिक्कत है. But anyway, that's another story. So I had butterflies, as you know, as would happen. But ठीक है. I ducked behind the camera and I worked. वो है. हम छुप जाते हैं उसके पीछे. उसकी कितनी हाइट से क्रैश की? 150 feet we were told. But providentially it didn't. वो tarmac में जो helipad था, it fell short of that. It fell in a field. और इत्तेफाक से while coming down it missed power lines. और वहाँ पर खेत था. खेत में बहुत सारी मट्टी का वो किया हुआ था. अल्लाह ताला ने बिछाई थी ताकि आपको चोट नहीं पहुँचे. आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल. But these things are faded. And you're lucky that you're still around after seeing that kind of an. And not just one. Working. Instances. That's nice. क्या बात है? But there was a premonition that something is going to happen. So I switched the camera on, and I got a shot of the crash. Still the point of impact. Wow. That is the cameraman's work. That is. That was the point to function in whatever it was. Phenomenal. उसके बाद, I mean, there were other occasions to be on helicopter, but ठीक है, I dealt with it. सर आपने एक दो मुद्दे बहुत अच्छे बताए हैं सर. दैट माइट बी गुड फॉर द एसोसिएशन इफ आई मे टेक द लिबर्टी. इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, preparedness, and that is where the organization, your organization can help, no? Also in a fraternal sense, जैसे हम लोग आपस में भी. Same, that's what I mean. Correct, sir. So exactly. Institution, organization level पे तो organizations being what they are. No, you're very right. Fraternal. Especially in the COVID phase, the whatever, the exploitative slash, I don't know what is the word for it. The reductive sort of. Exploitative versus? Case of organizations. That way. Oh, that way. Yeah. So Right. in that sense, so who has the time to deal with namby-pamby things like post-traumatic stress? I still have images. I mean, okay, Firozabad train massacre, not massacre, that disaster. नहीं, बट भाई साहब उसी कारण हाँ बैठो सर. उसी कारण जो मैं पहले भी बार कहा है, एक बार फिर कहूँगा, संस्थान या सरकारी सिस्टम से जितनी उम्मीद की जाए ठीक है, जितना हो जाए अच्छी बात है. जो अनौपचारिक रूप से हो वो बेहतर है. अपने आप से हो, अपनी फ्रेटर्निटी में हो, अपने कॉलीग्स के साथ हो. इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल मैकेनिज्म्स फॉर शेयरिंग एंड आउटलेट. एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा भाई साहब, बाकी सबके जो बहुत बारी हुई, आउटलेट्स चाहिए. मतलब आप जो कह रहे हो कि एक जमा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा जमा हो गया, वो जमा ना होने दे. द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इज सप्रेशन. क्यूमुलेटिव सप्रेशन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. अगेन हम इनफॉर्मली जो बात कर रहे थे, थोड़ा और गौर करिएगा, खासकर जो हम 40-45 के ऊपर के हैं और अगर फील्ड में काम कर रहे हैं.
अक्सर ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि ट्रॉमा और स्ट्रेस का मानसिक असर हो या ना हो, फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर होता है. Stroke, heart attack, diabetes will happen because of that suppressed trauma and the stress. So the ventilation and the trauma and the stress. So the ventilation and the pressure cooker model that Pallavji and we are talking about is essentially also to avoid the negative effects on the physical health. जो suppressed emotions है ना, खासकर trauma, उसका सबसे खराब असर होता है physical health पे. And this is rarely recognized. तो वो जरूर समझना सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर. डॉक्टर साहब कितना बच गया सर? क्योंकि यस प्लीज यंग मैन. सो सर अभी अगर हम भूल जाए कि हम जर्नलिज्म में हैं, ठीक है, हम ये भी भूल जाए कि हमें स्ट्रेस है, लेकिन हम ये देखें कि हमारे सामने वाला पर्सन है उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उसकी मदद कैसे करें? जैसे आपने भी बताया कि जो स्ट्रेस है वो फिजिकली काफ़ी अफेक्ट करता है, और जब हम किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, तो हमें दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, और हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या बात है और वो हमें नहीं बता रहे किसी वजह से, तो हम उसकी मदद किस तरह से करें? मेरा ये क्वेश्चन है. Remember that example that I said about two ladies sitting on the park bench. Common responses यही होते हैं जो अनडिजायरेबल है. अरे तुम्हें क्या दुख है यार, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है. That's the worst thing you can do. So first my list to you is what you should not do. What you should do to help that person is still the second list. Commonest errors is the don'ts. Don't sermonize, don't criticize, don't see it from your eyes. This is the commonest thing. मैं राय साहब से भी उस वक्त भी कहने लगा था, क्या होता है सर कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है ना, उसे आपका हमारा कोई लॉजिक उस वक्त नहीं सूझता. हमें लगेगा कि यार क्या मुश्किल है, कर देना. Only that person knows, that old adage of only the wearer knows where the shoe pinches. So there are some don'ts. Most important, avoid questions like क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. You know, it will have to be more exploratory questions of do you want to share, would you like to share with me or with somebody else. तो वो avenues जो है ना वो non-threatening होने पड़ेंगे. Very often what happens is, especially between friends and family members or any close colleagues, out of the genuine concern, it almost becomes an interrogation. And the first thing to do for a supportive interview is avoid all possibility of subjective perception even of being interrogated. उसकी जांच नहीं कर रहे हैं ना, हम उसकी मदद करने की कोशिश करें. अनजाने में हो जाता है या तो क्रिटिसिज्म या हम जांच करें, अरे यार क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ तो क्या हो गया, बहुतों के साथ होता है. Doesn't help, you know. Second, if you recall one important lesson, it rarely ever happens in one sitting. So if you have a friend or a family member who is undergoing a difficult situation, don't think कि मैं कोई जादू कर दूंगा कि आज 6 बजे मिलेंगे और इनको अस्पताल ले जाएंगे. It will require a few sittings, it will require a few sessions possibly. तो हम ये उम्मीद ना करें कि यार मेरा तो दिल बड़ा साफ है, आई एम वेरी श्योर कि इसको ले जाना है तो कैसे भी करके ले जाएंगे. except for genuine emergencies like if there is suicide risk, वहाँ फिर हमें लिबर्टी लेना पड़ेगी उस व्यक्ति के साथ, even with his liberty, to say okay, we will take you forcefully. The most important thing is, I hope you realize the difference between sympathy and empathy. है ना? What is required is empathy, not sympathy. Sympathy doesn't help, it only makes the person feel much worse. You know, the person is already feeling low, and then we are kind of sympathizing or puchkar rahe hain. So all the extremes of the reactions need to be avoided. No criticism, no interrogation, no excessive sympathy. More very important, no false reassurances. Huh, sir? So one more question. Please. Talking about the solution, आप अभी vulnerable लोगों की बात कर रहे थे, but there are so many people who are vulnerable, but somehow due to some conditions they stop sharing. What we can do for them? Who stops sharing? Who does not come out? And
See, if you are still talking about the social network of family and friends, first thing to recognize is that who do I feel comfortable sharing my pain with is my choice. You may think as my friend or as my family member, yaar, I care so much for him, how come he doesn't share with me? He has to share with me. ये भी हो जाता है. Our own vanity and narcissism, even out of goodwill, can actually misfire. So let that choice be with him. भाई इन 5-6 जनों में से मैं जिससे भी बात करना चाहूँ, जिस प्रकार के जिस समय में बात करना चाहूँ. If there are people who are really that difficult to reach with, then you need a professional counselor. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, हम जो आपकी जो वर्कशॉप हमारी है या जो हमने चर्चा की है उसके आखिरी मुकाम पर है सर. और मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये तो मैं अभी 35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, 35-36 साल हो गए. एक चीज़ मैंने जो भी मतलब आपसे मैं मुलाजा चाहूँगा उस पर सर कि ये इस प्रोफेशन को जब हमने इंटर किया तो हमने इसको इंटर इसलिए किया कि ये प्राइड प्रोफेशन था, प्राइड. और मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ और मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैं अखबारों में लिखता था, तो मेरे को ढूंढने के लिए एक अखबार वाला 3 दिन तक ऋषिकेश होटल में पड़ा है. वो फ़ोन तो होते नहीं थे और मैं रमता जोगी था, घूमता रहता था. तो और मेरी कोई एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं था जर्नलिज्म में, और वो मेरे को जब तक अपनी गाड़ी में बिठा के ले नहीं गए ज्वाइन कराने तब तक वो वहाँ शहर में उन्होंने छोड़ा नहीं. तो मैं गांव का लड़का, मुझके कोई अंदर कोई क्या क्वालिटी थी, मेरे कोई ऐसा कुछ था नहीं मेरे अंदर. मैं तो हिंदी और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा था, पहाड़ की, जहाँ बिजली पानी, बिजली भी नहीं, ना सड़क है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है. लोग कहते हैं टाट पट्टी, हमारे यहाँ तो टाट पट्टी, हम मिट्टी में बैठे रहते हैं. तो इस प्राइड के प्रोफेशंस में हम छोड़ के आए अपने जो एजुकेशन है उसको छोड़ के आए. और आज की तारीख में ये है कि हमारे लोग का जो ट्रॉमा है सबसे बड़ा प्रोफेशनल ट्रॉमा, कि वो कहता है अरे आप तो कितने साल हो गए, आप तो 50 साल के हो गए, अब तो आप किसी काम के नहीं हो. किस काम के? आप 42 साल के हो गए? नहीं 40 साल से ऊपर तो नौकरी नहीं है, ना कुछ काम है आपके पास. मतलब जितना आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका डिमोशन होता है. यहाँ दूसरे प्रोफेशन में है कि वो एडवोकेट होता है, उसके बाद सीनियर एडवोकेट, उसके बाद वो जज बनता है. यहाँ जितना उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं आई एम टेलिंग यू, आई एग्री, नो आई एम रियली दैट, आई सी दैट, या श्योर. दूसरा क्या है कि हमारी जो फजीयत इस कोरोना से पहले हमारे लोगों की, हमारे फोटोग्राफर्स की, हमारे इतने लोग जो फोटोग्राफर्स, मैं तो फोटोग्राफर्स का दर्द समझता हूँ ना, कि मैंने उनके साथ मैंने कारगिल की वार कवर की, मैंने जगह जगह सब जगह गया मैं, कि फोटोग्राफर्स तो असली जर्नलिज्म कर रहा है और उसको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि आप वहाँ नहीं घुस सकते, वहाँ नहीं घुस सकते. इस सरकार ने मुझे, इस सरकार कोई भी रही है, हमने उस सर के साथ सब सरकारों के साथ कन्फ्रंट किया. आप जो है पार्लियामेंट में एंट्री बंद कर दी. मतलब मैं कहा कि आप यहाँ नहीं आएंगे, आपका क्या काम है. हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया, जिसको कहते हैं आर्मी की लाइन में कि सप्लाई लाइन क्लोज कर दी. आपके ब्रेड एंड बटर बंद कर दिया. उसके बाद कह रहे हैं कि अरे खा पी लिया आपने, डकार मार लो. भाई आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने जो सप्लाई लाइन क्लोज कर दी पत्रकारों की. पीआईबी एक छोटी सी चीज होती है, पीआईबी एक्रेडिशन होता है, छोटी सी चीज है. क्या है, 70 साल से चल रहा है. उस एक्रेडिशन को लेकर के बड़ा भारी बवाल मचा हुआ. हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, यहाँ जुलूस निकाला, पार्लियामेंट के बाहर हमने 400 पत्रकारों का जुलूस निकाला. और इस मौके पर जैसे हम अपने दोस्त संदीप जी है, वो सबका दर्द है, सिन्हा साहब का, कि इस मुकाम पर हम नए जनरेशन को बोलते हैं इस सारे घास खोद लेना, लेकिन जर्नलिस्ट नहीं बनना. और मैंने अपने भांजियों को और भतीजों को जर्नलिज्म में आने नहीं दिया. 10 लोगों के मैंने कहा टांगे तोड़ दूंगा अगर तुम जर्नलिज्म में आए. और आज वो खुश है, वो कहता मामा ये चाचा आपने हमें सही बुद्धि दे दी, तो हम बर्बाद हो गए होते. वो ये देखते हैं कि ये हो क्या रहा है. तो ये डिप्रेशन हमारे प्रोफेशंस में, जैसे हमारे राकेश बाबू ने, राकेश थपलियाल ने जो बोला कि मतलब, और हमारे और लोगों ने बोला, हमारे विश्वेश्वर मिश्रा ने बोला, अपने सेक्रेटरी जनरल साहब ने बोला, ये जो प्राइड, ये जो कम्युनिटी इफेक्ट हो रहा है, ये गुड़ करके,
कि भाई आप किस लिए आए थे इस पर, और आज आप 25-35 साल 40 साल 32 साल प्रोफेशन में गुजारने के बाद करें कि आपका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है कि साहब आपको किसी मतलब एक जगह पर तो है, आप अनटचेबल हैं, टचेबल और आपको मतलब ऐसा मान लिया गया कि एक गाय है उसमें लठ मारो, वो लठ उधर चली गई, उसने उधर गई, उधर उसने लठ मारा। तो इस प्रोफेशन में हम किसी को इंस्पायर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको क्या बताएं। मैंने 2-3 इंस्टीट्यूशंस में मैं जाता था पढ़ाने के लिए, बीच में मैंने मना कर दिया उनको, मैंने कहा यार मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, शर्म आती है हमको पढ़ाने में, तो मतलब क्या बेवकूफ़ों की बातें करनी हमने वहाँ जा करके। तो ये चीज़ हो रही है जो मुझे यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों को क्या मैंने दर्द शेयर किया आपसे। नंबर एक बात, एक छोटा सा मेडिकल सवाल डॉक्टर साहब प्लीज सर, कि वो ये है कि कोविड पीरियड के बाद जो मेडिकल मिस एडवेंचर्स हुए, जैसे मेडिकल मिस एडवेंचर के घोड़े का इलाज, घोड़े के डॉक्टर्स है, उनका डॉक्टर है दवा दे दो, अब किसी डॉक्टर को ABCD इस जो रोग आया, कोरोना आया, वायरस आया, इसकी ABCD की नॉलेज नहीं है मेडिकल साइंस में, 99% को नहीं थी। हमने ऊट पटांग दवाएं खा ली, केमिस्ट भाई साहब ये हो गया, उन्होंने कहा वही फोन किया डॉक्टर को, नहीं पता, जो मर्जी दवाएं खा ली, अब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है, कई लोगों पर इफेक्ट हो रहा है। मेरे को 10 लोग मिल रहे हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी कोविड हुआ, मैं भी ICU में 17 दिन RML के ICU में रहा। अच्छा, क्या हुआ कि ये हो रहा है कि मैसिव मेमोरी लॉस, मैसिव, एंड अगर हमारे प्रोफेशन में मेमोरी लॉस हो गई तो आप खत्म हैं, फिनिश हैं बिल्कुल। तो ये दो चीज़ों पर भी मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता था, मतलब ये आपकी नहीं सही है पल्लव जी नहीं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ब्रीफली। पल्लव जी ने मुझे एक चीज़ याद, बहुत सारी चलेंगे सर, अच्छा कुछ राजेश मल्होत्रा, आई नो सर, बोलती ना बात प्लीज, यहाँ ना जरा Nimesh bhai, a really interesting session. Really, I agree with the lot of trauma suffered by all my brothers, sisters here from the same profession. And Rai Saab ka jo practical experience था, that would be the eye opener and need to be followed by all the juniors, colleagues and friends. And I hope your lesson of self-acceptance and self-knowledge is really the key to the coping up mechanism for such passing through this traumatic experience and environment. Thank you. And आप जाएं उससे पहले एक चीज़ रिस्पॉन्ड कर दूं, शायद आपने जो बात कही उससे समझ नहीं दो, फिर रकेश साहब के उस पर आता हूँ। मे बी इट्स नॉट रिलेटेड बट आई वांट टू ब्रिंग दिस टू द टेबल। एक और मुद्दा जो मुझे बड़ा परेशान करता रहा पिछले कुछ सालों से, वो ये है कि सारी दुनिया हैप्पीनेस के पीछे भाग रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस का जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था अभी 20 तारीख को कुछ, मेरा ये सीमित लेकिन बड़ा गहरा विश्वास है कि ये भी एक कल्चरल इश्यू है। सीकिंग हैप्पीनेस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हेडोनिस्टिक। हमारे यहाँ ज़्यादा महत्व है संतोष और सुख का। अगर आपको और हमें, और सर थोड़ा सा पार्टली वो जवाब हो, है ना, कि हैप्पीनेस बाहर से आती है, चीज़ों से आती है, संतोष और सुख खुद से आएगा। बिल्कुल सही है सर? तो नहीं सर, व्हाट डू यू से, है ना सर? प्लीज नहीं, आई कम बैक टू हाँ सर। हाँ नहीं सर, अभी लकेर साहब को मैंने जवाब ही नहीं दिया। जो खत्म हो गया, ये मैं इनसे आज रजिस्टर्ड या पीछे भी उन्होंने भी वही कहा, हाँ सबने, और कईयों के मन में है, सबके लेकिन फिर बोल नहीं पाते। और ये टाइम जो है
इसने भी इतनी मार दिया जन और खराब कर दिया, बहुत मारा है। एंड ऑन द अदर साइड द अदर पीपल। सेकंड मुद्दा क्या था सर? यू हैड अ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट था वो जो मिसमेनेजर ऑफ मेडिकल। हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ नहीं, मुझे पल्लव जी ने अगेन गाड़ी में याद भी दिलाया था, मैं भूल गया सर। ये जो राय साहब कह रहे हो तो आई है, सॉरी। नहीं सर, हाँ लॉन्ग कोविड। You see, there are a lot of terms, long COVID, ये वो। ये मैं आपको बताऊं, जैसे राय साहब ने बताया, लास्ट अप्रैल आई ऑल्सो हैड ए कोविड इन्फेक्शन। मैं 2 हफ्ते अपने घर रहा मस्ती से। I had for a few months, but more than that, personal experience, I see a lot of patients on my own and I speak to my doctor colleagues where लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कम से कम 6 महीने, 1 साल या शायद 2 साल तक चलेगा। इससे बिल्कुल परेशान मत होइए, एक। सेकंड, उसके सिम्टम्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होंगे और ओवरलैप होंगे। लैक ऑफ एनर्जी है, इंक्लूडिंग, इफ आई माइट टेक द लिबर्टी, वो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, विल पावर है ना, विपरीत हालात से जूझने की, इंक्लूडिंग प्राइड ऑफ द प्रोफेशन, माइट वेल बी अ पोस्ट कोविड थिंग। लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग एंड डेस्परनेस। कोविड उसको नहीं आप ला देंगे कोविड पे, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट है अपने आप में। नहीं, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। कुछ सालों में पनपा है और रूथलेसली पनपा है। इसमें तो मेरा जीरो नॉलेज है और आप लोग कह रहे हैं पक्का है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ सर कि अगर किसी हम में से 1-2 व्यक्ति को अगर वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो अपने आप से ये सोचे कि हो सकता है मेरे केस में पोस्ट कोविड सिम्टम ना हो। जो लार्जर रियलिटी वो तो है ही है, इससे तो इनकार करने की जरूरत हो ही नहीं सकती है सर। लेकिन अगर आप में से किसी को ये लगे, मोस्टली इनमें से किसी भी पोस्ट कोविड सिम्टम का इलाज दवाइयों से नहीं है। It's only healthy lifestyle and good nutrition that will work. Please avoid medication unless a reliable doctor tells you. यहाँ आपका सवाल था कि डॉक्टर्स भी बतरे मिल जाते हैं, variety of opinions and a variety of advices. So you will have to choose 1 or 2 good agencies that you can depend on. लास्ट में ये कहूँगा, पोस्ट कोविड को साइंस भी अभी समझ ही रहा है। Like we also 2020 में, 2021 में, we all were learning. You know, one thing that this epidemic did was, पहले साइंस में क्या था कि लैग पीरियड जो था ना, फ्रॉम रिसर्च टू एप्लीकेशन वॉज लॉन्ग। मानव जाति ये सीख गई दैट लैग पीरियड बिकेम ऑलमोस्ट 0। तो हम जो सीखते जा रहे हैं वही लागू कर रहे हैं। देयर इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट यस, यू हैव टू चूज योर डॉक्टर वेरी वेल। और कई बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, पोस्ट कोविड है या सिंड्रोमल डिप्रेशन है। सिंड्रोमल डिप्रेशन है तो दवाई से ठीक हो सकता है ना सर। तो वो मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू, आई एम नॉट हियर टू सेल साइकियाट्री, आई एम नॉट हियर टू से कि सभी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाओ। आई एम द लास्ट गाय टू डू दैट, यू नो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर अरे नहीं सर, नहीं सर। क्या बात है भाई, ये तो बच्चन जी के हाथों से बच्चन जी की फिल्म मिल जाए। देखो जी, आप हमें जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो सुपरस्टार है, तो आप हैं, आपको नहीं पता है ना। आपको जैसे नहीं पता कि आप फिलोसोफर है। आपके कद काठी भी वैसे ही है। एग्जैक्टली, सब कुछ है। आप अपने आप को नहीं मानते, वो आपकी ह्यूमिलिटी है। मैं कोई और, अरे वाह सर, एंड ब्यूटीफुल प्रिंट ऑल्सो। क्या बात है सर, आई नो। किसने बनाया भाई? वाह Wow. And very nice print. Very nice, sir. Very nice, sir. Very nice, sir. Very nice, sir. Sir. Thank you. आओ विनय जी, यार आप भी आओ यार। आओ सर, ये क्या सर? 2 साल पे एक अपनी एग्जीबिशन करते हैं। ओके। ओह ब्यूटीफुल। इस बार रह गई। नहीं, पर करनी है और डिफरेंट तरीके से करेंगे सर। उसकी बात हम अलग से चर्चा करेंगे सर। दिस इज ग्रेट। हमारी लास्ट एग्जीबिशन की जो वाओ डॉक्टर साहब, ये आपके लिए सर।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर। हमारे प्रेस क्लब के सब साथियों को सबको थैंक यू सर। हाँ जी भाई साहब। अरे यार सुनो, आइए सर, कार्ड रखे ही नहीं है, नंबर ले लीजिएगा ना, व्हाट्सएप बेस्ट है। जैसे पल्लव जी ने शुरू में कहा था, या वी वांट यंगस्टर्स यार, यू डोंट नीड टू गो अवे, हम सब वो 9810797933, ठीक है जी। एक बच्ची है 13-14 साल की, उसके कुछ मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके लिए मैं कंसर्न। सर व्हाट्सएप करिएगा ना, व्हाट्सएप कर दीजिए, फिक्स कर लेंगे पक्का। सर भाई साहब आप आओ ना सर, क्या कर, अरे नहीं सर, रघुराज जी के साथ आप आओ फोटो सर। भाई दिस इज फिनोमिनल। आओ जी सर, ऊपर आओ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा आपको वो याद है सुई धागा वाला? आओ जी। मेमोरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। फोन से भी कर लो, अपने फोन से कर लो। हाँ तुम्हारा दे दो ना फोन, मेरा वाला तो लगा हुआ है यार। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर रियली ये तो आपके कारण सर वी रियली एंजॉयड इट, वी रियली एंजॉयड इट। एंड ये कुछ शायद हमारा मेंटल स्ट्रेस कम करेगा। होता तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिलती, मतलब हो जाता है। मतलब वो ये हमारे प्रेस 1-2 महीने के बाद डॉक्टर साहब, ये प्रेस एसोसिएशन के हेलो हेलो सर, हेलो सर, नमस्कार सर। सर मैं आपको आपके माटी के सन से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा। खम्बाटा फ्रॉम बड़ोदरा। आपका केम छो साहब? हाउ नाइस। विजय जाल खम्बाटा। अच्छा। जो वेटरन जर्नलिस्ट, इनसे बड़ा फेमस जर्नलिस्ट गुजरात का कोई नहीं होगा। रियली? तो ही इज बेस्ड इन दिल्ली नाउ। Okay. इन अहमदाबाद, ही वाज इन born and brought in बड़ोदरा। ओके। आपका पता नहीं कौन सा सिटी है? आई स्टडीड इन अहमदाबाद। ओके। हाँ ओके, वेरी नाइस सर। काफी देर से मैं सोच रहा था